I would like to call on stage our moderator of this session, Mr. Naveen Kundu. We are joined by a visionary leader at the forefront of AI-driven tourism transformation, bringing cutting-edge innovation to how destinations market themselves. Please welcome Mr. Naveen Kundu, representing Tourism Futures AI, where artificial intelligence meets the future of travel. I request you to please come and join us on stage. Now, I would like to request Shri Shekhar Shukla sir, ACS Tourism and Culture and Managing Director, Madhya Pradesh Tourism Board, Government of Madhya Pradesh. Since taking charge in August 2020, you have played a key role in transforming Madhya Pradesh into a hub for adventure, culture, spiritual and ecotourism. You also serve as the chairperson of the Film Facilitation Cell, streamlining film production and encouraging investment in the state's cinematic infrastructure. I would also like to call Mr. Manish Puri. With nearly 30 years in aviation, Mr. Manish Puri now leads global sales at the Air India and Air India Express, shaping the airline's growth story worldwide. From Indigo and now to Air India, his journey reflects unmatched expertise in sales strategy, marketing leadership, and client success. Now, please welcome Mr. Praveen Chandra Kumar. He is an Executive Vice President, Commercial at the Indian Hotels Company Limited, South Asia's largest and most iconic hospitality group with over 550 properties globally. He is driving IHCL's strategic growth across India, including major investments and job-generating projects in Madhya Pradesh tourism landscape. Ladies and gentlemen, now please welcome Dr. Sushrit Bhabulkar. He is a global recognized orthopedic surgeon, academician, and innovator, currently serving as president of both the Trauma Society and Osteoporosis Society of India. He is an orthopedic surgeon by profession, but a hotelier by heart. He is the spirit behind serendipity. Now, please welcome Mr. Ravi Gosai, President, Indian Association of Tour Operators, which is ITO. Mr. Ravi Gosai, President of ITO, is a passionate tourism entrepreneur and two-time National Tourism Award winner with over 2 decades of industry experience, a global traveler and marketing expert. He actively promotes India's tourism while also campaigning social causes like women empowerment and education through his NGO in Uttarakhand. Please welcome Mr. Anirudh Kanpal, co-founder and Senior Vice President of Sales and Strategic Development at the Postcard Hotel, is a spearheading India's fastest growing luxury hospitality brand across India and beyond with a vision to redefine luxury tourism. He leads strategic expansion, including landmark projects in Madhya Pradesh National Parks, promoting sustainable development and local community empowerment. Now, I would like to welcome Mr. Rakesh Kumar Rana. He is a business head, hotels, partnership, and affiliated distribution at Yatra.com, India's leading online travel company with a pan-India presence. With over 24 years of experience in hospitality, travel, and e-commerce, he drives strategic initiatives including digital transformation and tourism ecosystem development, notably pioneering the online booking management system for Madhya Pradesh. Now, please welcome Mr. Rajan Sehgal. He is a seasoned leader in India's travel and tourism industry. He is a founder of Arrivals Air Services Private Limited and co-founder of Passionals, the country's first travel job portal. He serves as president of the India Golf Tourism Association, former chairman of Thai Northern Region, and actively contributes PhD CCI and FICCI promoting golf tourism and industry growth. Ladies and gentlemen, please welcome all the panelists on stage and the moderator of this session. I would also like to request Mr. Ellen Murthy, sir, please come and join us on stage. Ladies and gentlemen, please put your hands together for him. So the topic of this panel discussion is Madhya Pradesh from hidden gem to global icon. Madhya Pradesh, a land of UNESCO World Heritage Site, flourishing tiger reserves, wildlife sanctuaries, ecotourism, and vibrant festivals and cultures, is poised to emerge a global tourism powerhouse. This season will delve into strategic promotion of the state through diverse channels in tourism and hospitality, aiming to position Madhya Pradesh rich, world-class offerings as a globally recognized and sought-after destination. I would like to request Sushri Bidisha Mukherjee ma'am to please come on stage and welcome all the guests on dais.
सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ, I request you to please welcome Mr. Naveen Kundu, the session moderator. With the stole and the gond painting of Madhya Pradesh. Now I request you to please welcome Mr. L.N. Murthy, sir. मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, विदिशा मैम जिस अंग वस्त्र से, जिस स्टोल से स्वागत कर रही हैं, वो हमारे मध्य प्रदेश की ही पहचान है, खास चंदेरी स्टोल्स है, जिससे आज हम मंच आसीन सभी अतिथियों का स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं। ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष की बात है कि मध्य प्रदेश में विभिन्न वस्त्र हैं जो मध्य प्रदेश की पहचान है, उनसे मध्य प्रदेश जाना जाता है और आज हम उन्हीं को भेंट कर हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत कर रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो पेंटिंग्स भेंट की जा रही हैं, ये गोंड पेंटिंग्स हैं जो हमारे आदिवासी कलाकारों और मध्य प्रदेश के गोंड आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई हैं। ये बेहद ही खास पेंटिंग्स हैं और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जब भी ये पेंटिंग्स को आप देखेंगे, आप मध्य प्रदेश को याद करेंगे। और एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाएं मंचासीन सभी अतिथियों के लिए। बेहद खास डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है और ये डिस्कशन खास इसीलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश को हम सभी हिंदुस्तान का दिल कहते हैं। मध्य प्रदेश एक छुपा हुआ रत्न, इसे एक वैश्विक प्रतीक तक किस तरह से पहुंच सकता है, इस पर आज यहाँ पर चर्चा की जानी है। एक ऐसी भूमि जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, समृद्ध बाघ अभ्यारण्य, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों, इको टूरिज्म, रंग बिरंगे त्योहारों और जीवन सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है, अब एक वैश्विक पर्यटन शक्ति के रूप में उभरने को तैयार है। अब समय आ गया है कि दुनिया मध्य प्रदेश को न केवल एक पर्यटन स्थल बल्कि एक अनुभव के रूप में देखे, एक ऐसा अनुभव जो आत्मा को छू जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे इस सेशन के मॉडरेटर श्री नवीन सर से, कृपया आप इस सेशन की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। बिफोर आई स्टार्ट दिस एंटायर सेशन, I just thought of a tagline because, Mr. Shukla, I must tell you that I was so impressed yesterday when I landed in Bhopal after a long time. And the moment I went around Bhopal, I picked up a picture on the top of this convention center and I posted it and saying, this is not Istanbul, but this is our own Bhopal, the very heart of India. And the kind of infrastructure you people have developed here and the way, look at this convention center. And I even posted that. I said, this is not Moscow or this is not Azerbaijan. This is India. This is Bhopal. So, ladies and gentlemen, please put your hands together and give this government, MP Tourism, a round of applause for a wonderful, wonderful job they're doing, especially in the field of tourism. Please do tag us so that we... I will definitely tag you. So I have already done. Yesterday Praveen, I was in the Taj Hotel and I saw this magazine, The Week, and I was so impressed. What an effort in terms of promoting tourism. This is what we need. I'm sure the president of IATO, everybody, including the past president, members of the tourism fraternity in India will be impressed to see the effort Madhya Pradesh is putting in promoting the tourism and ensuring that people like us win our breads because of their effort. So thank you so much, Mr. Shukla, and thank you to the government. Amazing job done. I have also done a tagline because I thought Madhya Pradesh is always called the heart of India. But as they say in Kerala, it's God's own country. So I gave a tagline. If you would like to use it, I would love it. I said, temples, tigers, and timeless tales. The state is Madhya Pradesh. And I'm not even talking about, before I start this discussion, I must also thank Madhya Pradesh Tourism for putting a distinguished
panel. I have never had an opportunity of having such a great panel ever in my life before, wherever I've spoken to. I have the additional chief secretary, the government of Madhya Pradesh, handling multiple affairs more than even tourism. I have Manish Puri from Air India, who has been a stalwart of the airline industry for so many years. I have Praveen, who has been a great hotelier, leading India's leading hotel chain. I have Anirudh, who is leading India's experiential luxury hotel business. I have Rakesh, who is from the online travel agency background. I have Rajan, who is from the immersive experiential tourism. You know, and I have a gentleman here, Dr. Saab, who's from the local, who understands the local experience, Dr. Babulkar. You know, I don't see a panel, and I have Mr. Murthy, where, you know, the reason I'm wearing green in Madhya Pradesh is because I'm a wildlife guy. So we have an ecotourism and a wildlife person in terms of Mr. Murthy. And I must also recognize and acknowledge the efforts of the government of Madhya Pradesh, not only in terms of tourism. See, tourism is very important, we understand, but for tourism, what they've achieved in agriculture as a star performer with Krishi Karma Awards, the rural road network that they have built recently is a great tourism enabler. The industrial investment and the infrastructure push that this state is doing is amazing. What they've done in renewable energy, setting up food parks, the gross state domestic product is amongst the highest in India. It is today stands at 15.22 lakh crore, which is the 10th state in India. The per capita income in the last 5 years is continuously growing in Madhya Pradesh. And you know, the only thing that I would want to, I would have loved to see is that last year Madhya Pradesh got 13.41 crores of tourists, and there were only 1.67 lakh foreign tourists. And the reason we are meeting here is precisely, and the subject is appropriate, Madhya Pradesh, a hidden gem to a global icon. So now I will start my panel discussion. I will go across to the Honorable Chief Secretary Sahab. Sir, government का काम होता है, government का काम business करना नहीं होता actually. Government का काम होता है policy, framework, infrastructure development, connectivity, and basically building a story for a state or for a country. I would really want to know from you, and since you've been so involved in tourism yourself, what are the steps Madhya Pradesh is taking in terms of, like, for example, I read in this book that you did a number of road shows recently. You got awards also. But what are the steps Madhya Pradesh is building, keeping the global tourism in mind, because of the fact that today, what is compelling for us is to get global tourists to Madhya Pradesh, because Indians are anyways coming in, and probably we have an over-tourism of Indians because of our Jyotirlingas and all that. So in terms of policy, in terms of infrastructure, in terms of connectivity, and in terms of public-private partnership, I'd like you to throw some light on that entire process. Thank you very much for this question. And first of all, let me say sorry for being late. There was some important visit of head of this administrative machinery of the state, Chief Secretary Mr. Anurag Jain, was going on in the B2B pavilion. And he was so keenly observing the entire gamut of activities going on there. And he spent quite a bit of time with us today. So I thought it's a good opportunity. He's spending so much of time, it doesn't make sense for me to just escape from the scene. So I could afford to say sorry to you coming late here, but I spent some time with him. Thank you so much, and for bearing with us. So this question absolutely is a correct question, because this is not government's job actually to do business. We are there to promote business. We are there to facilitate business. We are there to create right kind of environment for business, right kind of ecosystem for business. But there are certain states which are doing very well in certain field. They have already reached that threshold level of development of that ecosystem in a particular domain, say, for example, tourism. And the state, for example, like Kerala, they have gone to that stage where private sector has totally taken over and they are running the show. But Madhya Pradesh, somehow, we do have exemplary destinations and wonderful things to showcase to the whole world. But somehow, the
private sector has not been able to take it to that particular level which is required. So here the government has to pitch in. So we have created the right kind of policy framework so that our basic hospitality infrastructure improves. Of course, tourism is one area which is highly interdisciplinary, and that's a huge challenge. Because when we promote a particular destination, we need to have right kind of roads, right kind of cleanliness, hygiene, right kind of connectivity, everything which is divided into so many government verticals. To converge all of these government verticals into one focus point is huge challenge. But still, we have taken up that challenge. So here we are bridging the gap and trying to create a kind of ecosystem where the private sector comes in and starts pitching in to create the right kind of hospitality, infrastructure, amenities, also creating right kind of experiences for all the visitors from the nation and from all over the globe. So we have come out with very fine investment tourism policy where we give very attractive incentives and also do hand-holding when it comes to, a private investor is busy man. His energy, his enterprise, his money, everything has a value to it. You cannot waste their time unnecessarily. If they've decided that I have to do this particular thing, this particular project, government will have to come out in full support of that investor and to make it a very easy go for the investor. So we have realized that. So yesterday also in my presentation I briefed that the main underpinning of our investment policy is ease of doing business, and the government goes out of the way to do hand-holding. Wherever investor feels any problem, we are there to take care of them, coordinating with other departments, other government machinery, and also helping them to make their projects viable by giving them different kind of incentives. We have also opened doors under a public-private partnership so that more and more new kind of innovative projects are taken up where it creates a win-win situation for both the government as well as the investor. So these are from the investment angle. The other, which is very important from tourism point of view, is the branding, marketing, and going to the markets, taking Madhya Pradesh to national, international markets. So this MPTM kind of an arrangement, this is an effort towards that. Here the businesses from the state and businesses from across the India and from all over the globe. This is a small effort from our side, and we are very pleased to host people from 28 nations who are people of eminence in the tourism field, who have come here, and they are doing their business right now, just adjacent in a hall. And more than 4,000 B2B meetings have already been fixed. In next 2 days, they will have the meetings, some tie-ups will happen, some networking will happen, and that will lead to, easy flow of tourists into the state, and the marketing, branding part, which we go nation to nation, exhibition to exhibition, state to state. Here, a lot of things are being done in this forum itself. And yesterday, our Honorable Chief Minister was very kind enough to have announced that this MPTM thing is going to be a routine annual thing now onwards. Every year it will happen. It will happen 11, 12, 13 October, come whatever may. And here will be chance for our local, entrepreneurs, and it is a chance for us from the government side to create that ecosystem which is required to take off business beyond a threshold level, which is badly desired in a state like us. This was the second point about marketing, branding. Of course, when we go to international exhibitions, we do take our businesses with us. We give them space in our pavilion. Everyone is welcome to participate in more and more numbers. And my ambition is that I must have a pavilion as big a size as the India pavilion is, so that we give space to anyone who wants to go there and showcase his product or his particular property, etc. And we do have very good policies to support them for this. At the third level, which is a bigger level, like connectivity, is again multidisciplinary. It's again
related to the government, related to the private sector, and that is why I have kept Manish Puri ji on my left-hand side and ISCL on my right-hand side. So, so that my job is to make them talk to each other. They're all, you know, Tatas, after all. So my job is to make them talk to each other and make them to talk others. How businesses are going to increase here, how we are projecting Madhya Pradesh in times to come, how the tourist footfall is going to increase. So let them have these kind of projections into their business understanding. And I am very sure businesses go to the place where there is a demand. It's not a push factor, it's a pull factor, which works more. So if more businesses coming their way, they will be too happy to start new flights, connect more places. So this is from my side to bring in all the private stakeholders on one platform and discuss with them, nudge them to create right kind of partnerships. That at this level, government also has to play a role. Till that happens, are we going to wait for Air India to operate operations New Delhi, Khajuraho, Banaras, which used to be a big hit at one point of time, and Khajuraho used to be a big global icon for India? No, we are not going to wait for that day. I know Manish would be working on that. He's kind enough to have come at our invitation. Whenever we call him, last year, IATO he came. This year again he has come. And I'm sure he's geared up. But till they reach a particular level, our job is to bridge that gap. So here we have started our own intra-state air services. We already had one plane flying last 1 year. That plane has carried more than 10,000 guests across the state. Yesterday, we cemented ties with 2 helicopter service providers. We'll be having 3 helicopter zones flying within the state. One connecting all the national parks, one connecting heritage places, one connecting religious places in the eastern, center, and the western part of Madhya Pradesh. So here we are bridging the gap. We will not let any guest who comes to Madhya Pradesh have a feeling that it's so difficult to go to distant places. I want to go, but how to go? I want to reduce that question to a non-existent one. So these are the things which, as a government, I'm going, sorry for being a little long in answering that, but I feel that this understanding has to creep in everywhere, in the private sector, in the government sector, until unless we put our hands together, we put our efforts together, we converge each other's interest, things are not going to take shape. And Madhya Pradesh is geared to always take that extra step to lead from the front and to maintain that balance within all the stakeholders to create that kind of a right ecosystem. Thank you. Thank you very much, Mr. Shukla. I think very, very encouraging. Very encouraging because, you know, the topic you touched on public-private partnerships, on connectivity, and on marketing. And, you know, that collaborative effort that is waiting to explode between government and the private sector, I think will give a great boost in its push to make MP a global icon. I'll come back to you, sir, for another question, but let me just first go across to the Tatas, okay? And my question will be more or less very similar to both of you. On one side, Manish, you've been a great, you know, airline provider in this country from your Indigo days earlier and now to Air India. And as sir mentioned, I remember probably आपको याद होगा राजीव जी वो जो इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट होती थी दिल्ली खजुराहो बनारस उस पे कभी-कभी हमें ब्लैक में टिकट खरीदनी पड़ती थी याद है आपको मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s उसमें ब्लैक में टिकट खरीदनी पड़ती इतनी फेमस थी वो फ्लाइट सो मनीष you know last mile connectivity and infrastructure that's a big question. For example, for a global tourist, I'm not even talking about Indian tourists right now, I'm talking about global tourists. So, you know, if you compare MP with Africa, we have several national parks here and we have Khajuraho here as a great convention city. We have this entire circuit of Madhya Pradesh, which is indeed very rich and classy. If I have to rate a tourism destination in India, comparable to any other, which could be Rajasthan and Kerala, I think Madhya Pradesh stands out clearly in terms of its diversity. So, you know, in Africa, if you see, people land at Nairobi or at Kilimanjaro airport, and then they are taken these small aircrafts, which are 11, 12, 13 seaters, right up to the last mile, various national parks, there are various flights. While Air India is making an effort, and while other airlines, and more, my question is more to do with the airlines, are making great effort in connecting India to the world,
and then India within India. The challenge lies with the last mile connectivity, and I think the moment India has that kind of infrastructure available, which I think Mr. Shukla also said that they are making great efforts in terms of putting infrastructure together. I needed to throw some light on that as to where are we going wrong in terms of the last mile connectivity. While we are building a great airline network in this country, we've got fabulous airports now. I mean, I was so proud and I felt pleased when I landed at the Bhopal airport. What a wonderful reception. So I need you to really give us more insight, and to the foreign operators here, as to what is the role airlines are playing in terms of this development. And then I'll go across to Praveen on collaborative marketing. Good morning, everyone. First of all, thank you to MP Tourism, Shiv Shankar ji. Always, they, just as they are heart of India, they invite also with full of heart and effort, and always a pleasure coming here. So Naveen, there are 2-3 parts to it, and as you said, I would prefer answering it from the airline perspective and not from an Air India perspective. We are on a neutral platform. So it happens when you start the journey from outside India and ends at Kana National Park, right? That's what you are asking, that from where till the end. And there are various stakeholders who have to build this journey so that the global customer or the foreign tourist who wants to come here has that experience till the end. And there are multiple people who are involved, multiple organizations who are involved. As airline, I think it's our duty, it's our responsibility to bring tourists from various parts of the world into various states. And I think I must compliment Madhya Pradesh Tourism. I think I'm seeing it for last so many years. The amount of effort they are putting to bring tourists into Madhya Pradesh is, if 7-8 states in India start doing something similar what Madhya Pradesh Tourism is doing, I think there will be very fast growth of tourism in India. So one thing what is very important, I think, and which is a bottleneck, not when you land in Bhopal, there is a bottleneck when you land in Delhi and Bombay also, Naveen, where a tourist, when he comes in, he has to pick up his baggage at Delhi airport and not at Bhopal airport. And this is a bottleneck. While going also, a Bhopal traveler does his immigration in Bhopal, does his immigration in Delhi or Bombay or whatever is the last mile. That is one big initiative with a lot of effort by various airlines, Indian airlines. Finally, the government of India has agreed to do a pilot test where the immigration will happen from the origin of Indian city. Oh, lovely. Fantastic. Right? The pilot test will be happening probably not less than next 60 days. Both Air India and Indigo both are into that pilot. The initial pilot is for the outbound, where you will do your immigration in your home city, and you just have to, just like you do it in Dubai or Doha, you only spend time in the transit lounge or transit area in Delhi or Bombay, and then you go and travel. Similarly, the experience would be that when you're coming back, you don't have to pick up your luggage, and then you pick up your luggage. This is one big bottleneck which an Indian carrier was facing, while any foreign carrier where he was going from Hyderabad, they were doing the immigration there, do everything during midpoint and get the baggage at the end. So this one big bottleneck will reduce the discomfort which an Indian traveler or foreign traveler was facing, and they will pick up their luggage. Second thing, what we need to build as airline is making India as a part of the itinerary, where Air India in particular, what we are trying to do is that we are trying to build Delhi or Bombay as a hub, and we'll start working, and we already have initiated discussion with Taj and some other operators, where we want to ensure that anybody who's passing through India spends more time in India during that transit journey also. Where we would like that if somebody is landing, we will create an itinerary where they get 2 or 3 days of stay in India in that same fare or the part of the fare, and they travel whether to Bhopal or Indore or Ujjain, and they
come back and they further their journey. That will create a further experience or a long time tourist when he sees Madhya Pradesh only probably for 2 days. Next time he will come to India for 6 to 8 days or 10 days, because that's only a trailer of a journey where he will experience it. Now coming to the last mile, it is obviously, as sir had rightly pointed out, that there has to be a journey from Bhopal or from Indore to the last place where the tourist had to go. And I'm very happy that Madhya Pradesh again has taken the lead of building that last mile journey. Indigo already is building that journey. They have smaller ATR aircrafts where they are going into 3-tier cities where they are taking the customer from that city to the globe, right? So it's a long journey. It doesn't happen. It's a capital intensive journey where somebody has to invest. But yes, I think when we all come together, we have to change the story about India. We have to change that story that it's just not Agra and Jaipur. There are 10 different Agras available in India and 20 different Jaipurs available all across India. So I think that's where we, as part of that chain, airline, Air India Express will play its own important role of doing what we should do. We should be ambassadors, not in India itself. In every country we are flying, we have to promote not Air India, we have to promote India. And we'll definitely work with Madhya Pradesh Tourism and ITO and all the stakeholders who are there, who will like to bring tourists into India and give that feel and warmth of what every Indian can give. Thank you. Thank you, Manish. Very encouraging, very encouraging. And with this question, I'd like to go across to, first of all, this entire immigration thing that you're telling me from the base airport right international will be a very big step. Because when you give a through chicken and a through immigration to people, it solves a lot of problems. And when you solve problems, you build more and more, narrative overseas saying that, look, India is now a very similar country that you check in at one place and then you can go across to any major global hub. Praveen, I'll come to you. Taj, India with Taj is we all know Taj. You have 8 or 9 hotels in operation, and you have another 7 or 8 which are under development right now. And Taj, as we all know, has a legacy of Taj and Tatas, of course, have a legacy role that they've played in the development and the building of the Indian tourism. With your kind of global network, and with your kind of luxury marketing, luxury experience and the kind of market build-up that you have, in particular Madhya Pradesh and generally about India, when Mr. Chatwal recently spoke at the Faith and said, I'll spend 200 crores over building India narrative, I would want you to please let us know, what is the responsibility Taj is taking in terms of marketing India and marketing Madhya Pradesh in particular? Interesting question. So, firstly, I would like to compliment Mr. Shukla for an excellent travel mart. And I was just telling him that, the quality of execution is so good. And overall, the conversation that I've been hearing, I think it's a 3 parts. It's the vision, conviction, and execution. And I think all 3 of them have come together. And they have an intent and the will. Yeah, they have the intent and the will. Yeah. And we've all noticed it yesterday and today. So then I would start with Madhya Pradesh. So see, our association with Madhya Pradesh goes as old as 2006 when we actually set up the first safari. And at that time, it was the first luxury safari of India. And we chose Madhya Pradesh to do that because the government was extremely helpful in setting up a structure, which till date is supposed to be one of the best safaris. And after that, we know that a lot of destinations. And after that, all these sectors have become extremely popular. Now, coming back to the IHCL and the Taj Group. So, 2 years back at the IATO conference, we made a commitment that we are not going to wait for anybody to start marketing. We will start with ourselves. As they always say, it starts with your own home.
And we said that we will market India along with the foreign travel tours and IATO in all the key destinations where there are fairs. And we've done a lot of physical events there. So I think we've done about 6 of them now, and we are on the second cycle. So these will continue, and that's what Mr. Chatwal mentioned, the first set of investment of 20 crores, which is coming from our side. In addition to that, what we also do is we also do a lot of digital marketing in all the key source markets. And it is done under the banner of India with Taj. And what we do is we take the hotels and we try to get people to understand what India is all about. The first thing is about India. All our messaging is about India. And of course, at the end of the day, it's the Taj and our own hotels. As far as Madhya Pradesh is concerned, we currently have 9 hotels. And we have 8 hotels which are in the pipeline, which means that out of the total 4,500 projects which are in tourism, which are in the state currently, 1,600 crores is with Indian Hotel managed. So we are so kind of well entrenched into it. And we continues to look for at least another 10 hotels that we want to sign up in the next 2 years. I had a chat this morning with my business development team on what are the opportunities. And I think there are 2 or 3 things which are very good about Madhya Pradesh. One is, of course, is the center of India, so connectivity is very good. Then in terms of the culture, it's very welcoming. There are so many heritage sites. The water tourism and other kind of stuff is yet to be taken up. So people feel at ease here and feel very comfortable, specifically the religious tourism, because we also launched a campaign. We were the first hotel company to launch a campaign called Spiritual Tourism in India, where what we did was we went and mapped 150 spiritual destinations. And then we said that which are the hotels that we have close to it. And we provide kind of an add-on services to people when they come and stay with us for spiritual tourism. And now the second part is started where we are setting up hotels which are closer to the hub. For example, in Ayodhya, as we speak, we have 4 hotels under development. And the 5th one is about to be signed. So, I mean, that's the kind of how much we are invested into it. So, we will continue working ourselves and also with the government and with the tourist bodies and travel tour, IATO and so on, to ensure that we are able to send the message of travel to India. Because I strongly feel that the last 1 year hasn't been very good for the inbound travel industry. And if we don't turn around this tide, we are going to have a problem. And what happens is it takes almost a year or 2 for people to remember the country. And currently, the knowledge of India is at all-time low. So that's what we need to do, and we'll continue kind of promoting that. Thank you, Praveen. And, I remember that campaign, which was called India with Taj, long back. And, that was an amazing campaign. Whenever I would travel overseas, I would switch on the local television channels, and I would say India with Taj. What you just said is, I think, very key, that currently India's inbound is at an all-time low. And even the perception of this country is a bit shaky. However, we all know that the Prime Minister of this country, who I call the biggest brand ambassador of our country, has put in a major effort, a massive effort by telling everybody, send 5, if you have to do something for me, you send 5 people to India. I think, and I must tell this audience today, and I'll take a little bit of a pause from the panel discussion, that it's time that we build our own story. We've always allowed foreign tour operators to build our stories. There hasn't been a time when India has actually built its own story. We've built small stories like Rajasthan, like God's own country, but we've really never built a narrative and tracked the consumer journey from overseas. And that is the reason that Indian tourism today is suffering when it comes to inbound foreign tourist arrivals, which are way below the outbound departures that we do, and that is the reason we have a huge trade deficit. Today, I think all of us sitting in this room and this distinguished panel, which is very unique in its existence, is something that we need to understand, that we need to build a story and a narrative. And we need to track the consumer journey directly. We cannot be relying on a brochure support that we provide a foreign tour operator, because at the end of the day, you're restricting your image and your entire performance within the intelligence coefficient of that foreign tour operator and their will to promote India. We need to go beyond that.
Earlier, it was very difficult and more expensive to reach out to the consumers. But today, with all the tools that we have on one gadget, it's important for us as a state, as a country, and as to our operators and stakeholders like hotels and airlines to actually build our own story and our own narrative, to track the consumer journey and to reach out to the consumer and talk about the story of India and especially Madhya Pradesh, which I again repeat is temples, tigers, and timeless tales. I'll come to you, Dr. Dr. Saab. Babulkar Saab, you have been a local investor, and you're a doctor yourself. I would want to understand from you, being a person in the state, working very closely with the state, are we really building a story for Madhya Pradesh? Because as I said, if India has a state which is so inclusive in tourism, it is Madhya Pradesh. So, are we really building a story for it? And how are we communicating that story, sir? So, first of all, thank you very much, my dear friend Shivshekhar Shukla, for roping me in. And in fact, this is the first time ever I'm going to tell the audience the serendipity story. I'm an orthopedic surgeon. I'm currently president of Trauma Society of India and Osteoporosis Society of India. 1998, sir, I came back to India from England. And 2005, I bought 1 acre land on the top of the Satpura mountains. When I was treating the local people there, the local tribals, Bharia is the community which stays in Patalkot. Bharia means people who shifted the treasure from Nagpur to Patalkot on their shoulders. So they carried the bhar, so Bharia. I happened to treat one of the oldest patient there, who was 94-year-old then, had a fracture neck of femur. I replaced his hip. He started walking. And so the entire tribal community started believing in me, all the 16 hutments of Patalkot. Now the story starts there. 2013, 14, 15, the entire country, of course, was facing the global warming phenomena. But it was more so in central part of India because Chinwada, Nagpur suddenly had rains, and of course we all know about it. And when the forest looked into it, we realized that it was the tree cutting of Satpura mountains, which was done by tribals, and they were not listening to government officials, they were not listening to forest people. Forest approached me, suggested that, doctor, you come as a doctor, we will go together to all these places and we will create awareness. So I literally spent my Friday, Saturday, Sunday going with forest officials, taking camps in all these hutments and making tribal people aware that stop tree cutting. After 1 year, all these tribals came to me, sir, आपने बोला, हमने कर दिया, अभी अब खाएंगे पिएंगे क्या, क्योंकि इसके ऊपर तो हम जीते थे. And that's how the blue map of my resort was born. And we trained all those 350 people from the local tribals in construction, civil work, in plumbing work, in electrical work. They got trained. After 3 years, when the resort was built, they shifted themselves to Bhopal, Indore, Raipur, Bilaspur as now trained laborers, skilled laborers. Now remained 100 people. That time I had good connect with Ratan Tata sir. Ashish Deshpande is a close friend. So ex-Taj people trained those 100 remaining people in excellent housekeeping, excellent kitchen work, and they are the working force today. So that's the serendipity story. Involve locals in some way or the other. You have to find your own story in that region. So now we don't have to teach even the worker there how to greet, because they feel that it's their house, they built it. So they have their heart and mind and soul into that property. Now, that's why I was requesting, sir, another 200 trained people are lying there. Give me another piece of land, I will flourish it. We'll create Madhya Pradesh story. Let's do it together. So, basically, we have to create such small serendipity stories all over the state. And
when we involve locals, the locals will bring the entire country to us, the entire world will come to us, I think. Future of the Indian tourism is, this is what it is. It's called inclusive tourism, where you are actually empowering the smallest class in coming and building a narrative for this country. And that's what this country is so diverse. I think the world really needs to take notice of what we have to offer. So I'll just add one moment. I'll just like to highlight, because Dr. Saab is from Nagpur. He's not even from Madhya Pradesh. He's from Maharashtra. But he has made Madhya Pradesh as a second home. That's one. Number two, staying in serendipity is an experience itself. And beautifully, he has done it with a lot of passion. His passion is seen in every nook and corner. So, and he came up with this resort during COVID time. I visited, incidentally, just passing through. So I asked my fellows if there is some decent place I would like to see here. कोई ऐसा होटल वगैरह है थोड़ा फ्रेश होने के लिए. तो पहले तो बोला साहब यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं. PWD का एक रेस्ट हाउस है सिर्फ. 100 kilometers on either side, there is no other decent place to stay. And he came up with this resort out of the blue in the top of the Satpura. And mind you, he did it so sensitively that forest department generally is slightly, conservative about it. But they are all his friends. They have done it in total convergence. Each other's sensitivities were addressed together, and he came out with this. These are, showcase models for others to follow. That's empowerment. That's empowerment. But today I can tell you, Dr. Vibulkar, I run an organization called Tourism Futures, defining the future of Indian tourism marketing. And today my post will be on your entire concept, that what you developed, and I'll tag you on that. Thank you very much. Such a wonderful, attempt that you've done, and what a great initiative. Ravi, the most important person now for the Indian tourism currently. I think with what we've heard so far from the state tourism, from the stakeholders like airlines and hotels and the local, the local push that's been happening, we've heard all of this. There seems to be a kind of a confusion in the minds of global community today. And we've seen it in various travel marts, right? Is it India we are promoting, or we should promote, or is it the states? There seems to be a fragmented approach. Like Sir said, that tomorrow, next time I would want to have, first of all, I'm glad that, with the help of FICCI and state tourisms, we are doing these travel marts in each state, because that's how we actually build a story. But the approach seems to be fragmented at the global level, not at the country level. How do you propose to change this? Are we going to be marketing India, or are we letting state tourism to market state tourisms? How are we going to blend this? There seems to be a fragmented approach globally. So this is something that, we need to hear from you as to what is your approach towards it. Thank you, Navinji. Thank you, sir, for this wonderful platform. One thing I must acknowledge, that all three gentlemen sitting in the center, whether it's a government, hotel, or airline, we are the one who takes them to the clients, actual users worldwide. And we need their support as much as they need our support. So this is our continuous efforts when we go abroad to take Indian products. For example, it's very seldom that leisure traveler comes to India and stays at Marriott or Hilton's. They want Indian hotels. So, and I must appreciate what Pravinji said, that in recent years, they've started promoting India by Taj, and did the first what government should do actually. So they are doing India Evening, they did in ATM, they did in London, they did in ILTM Cannes, several places. And we must appreciate that they took industry body, IATO, along with them. So this is a great things. See, to the central government also we say time to time that when India is projected outside, it should be as incredible India, and all states should be aligned to the vision of what India want to sell and want to promote. Recently we got success with WTM, so we were behind them that please allocate space to all states close to India,
or earmark one space where you will have all the states around, and also the private operators if they want to participate outside India pavilion. And this year in WTM, you will see all are at one place. Because what was happening earlier that one state is here, then you have Sri Lanka, Bangladesh, and then you see another state on the other side. So people are confused. Outside India, India is known as incredible India. I'm sorry, sir, no offense to any state, but states are not known. I was recently at IFTM in Paris, standing with the secretary from Tamil Nadu, and one of the tour operators said, "Ye kaun sa country hai?" So this is, so we need to set up this narrative, and when we go abroad to make promotion for India, it should be aligned with Ministry of Tourism, Government of India. So we are in touch with the DG Tourism also. We suggested them that they should set up the guideline for all the states. When you go and promote abroad, it should be on the similar lines. And on the other thing, you said the fragmentation. So we should not sell, because whatever efforts Madhya Pradesh do when they promote, I've seen the Madhya Pradesh as a brand is doing very well in last 1 decade. They are present everywhere. They are doing road shows. They are bringing tour operators in the country and showcase their product. But unless there are good coordination with the tour operators, because they are the one who will sell actually the destination in future. So it's a very good combination. I must appreciate for MPTM that they have invited FTOs as well as the domestic tour operators. So they have to work in tandem to promote any state as a tourism product. So I think in future also, you said that digitally we can connect very easily. So I was just discussing before this conversation, this session with Air India and Taj that we want to do a road show. And we want to take not only tour operators like what used to do before with Ministry of Tourism, but also airline and hotels, so that it will be a collective roadshow for India. There are tour operators, travel agents who will only come for airlines, but then they will get to chance to meet hotels and tour operator and vice versa. So I think this kind of process and policy should be adopted by central government and the state government. This is what I believe. No, absolutely, I agree with you. And so from your conversation, what I comprehend is, let India get the tourist and let states win the itinerary. I think that's, let's put it, to simplify this, it's like India has to get the tourist, and let state win the itinerary. With this, I want to go to Mr. Murthy. Mr. Murthy, I have a special affinity to your department because I'm a wildlife lover. So my question to you will be in two parts. Part number one is definitely about promotion of wildlife, because I think Madhya Pradesh has 12 national parks. Basically 8 tiger reserves and 12 national parks. In terms of what is the effort being put to put this entire wildlife tourism on the global map. But at the same time, I have another contradicting question for you, and that is ecotourism and carrying capacity. In pursuit of promoting national parks and building the tourism narrative there and getting more tourists there, with high visitor footfalls that we anticipate in popular tiger reserves, what is the specific administrative framework to balance tourist revenue generation with the crucial need for environmental stability and maintaining the ecological carrying capacity of these sensitive national parks? Good morning to all. First of all, on the outset, I thank ACS sir for inviting me and having here. Can you be a bit louder, sir? Madhya Pradesh is very rich in wildlife. As you told, we have actually 11 national parks and 26 wildlife sanctuaries and 9 tiger reserves. This is the highest in the entire country. And you are welcome to the state of tiger state. Madhya Pradesh is a tiger state, leopard state, and also now we are cheetah state. So we are leaders in wildlife conservation across the country. And in the last year, if you see, almost 26 lakh tourists visited our tiger reserves and the national parks and the wildlife sanctuaries. So coming to the question of the carrying capacity, so as per the NTCA guidelines, we do tourism in the core areas around 20% of our total geographical area of the national parks and core area, whereas we do tourism in the buffer areas also. We are promoting, in fact,
tourism in the buffer areas. And Madhya Pradesh is blessed with very good forest. Apart from the core areas, even our buffer areas are excellent for wildlife safaris and experiencing wildlife. So we are promoting the tourism in the buffer areas and in the corridor areas. So we have the famous tiger reserves, you all know Kana, Bandhavgarh, Pench, Satpura and Bandhavgarh. Now with the Forest Department, Government of Madhya Pradesh, we are promoting tourism in all other, the lesser known tiger reserves like Sanjay Tiger Reserve, it's coming up very well. And the Virangana Rani Durgavati Tiger Reserve is going to be the future tiger reserve of Madhya Pradesh, where we are promoting tourism. And Panna, you all know the story. In the last 2009, we had 0 tiger, and now we have more than 70 tigers there. And tourism is flourishing there now in Panna. And next to Bhopal, we have Ratapani Tiger Reserve. That's also going to be one of the future tourism spot in Madhya Pradesh. And the western part, in fact, in the last 4-5 years, we have done a lot of good work to promote tourism along with the conservation. Like Madhav National Park is notified as a tiger reserve, and Kuno we have reintroduced cheetahs. So Kuno, then the western side Gandhi Sagar Sanctuary, that's another upcoming area. So we are trying to promote tourism not only in the existing tiger reserves, we are also trying to promote other tiger reserves and other sanctuaries and national parks. So that's our motto. And actually in Madhya Pradesh, if you see the conservation, we involve the communities. Its conservation is not only talking about wildlife, also through the tourism we are supporting the communities. The entire model of conservation, wildlife conservation in Madhya Pradesh is tourism, community and conservation. So whenever you visit any tiger reserve or any national park in Madhya Pradesh, whatever you are spending there, that entire money we received is plowed back for the conservation and to the communities. So that is one unique model which we are doing it in Madhya Pradesh. Of course, we are promoting not only the safari tourism, we are also promoting now trekkings, and we are promoting camping in the buffer areas, and we are promoting boating, canoeing, all other activities also. And Madhya Pradesh is the one place, actually, it's not only promoting tiger, we are promoting all other activities. And this is the one of the best state to see the tiger in the entire wilderness surroundings. So it's not just sighting a tiger in one place. You see a tiger, beautiful tiger in the backdrop of salt forest in Kana, a tiger swimming in Tawa backwaters, and you see a tiger in Ken River in Panna. So we have unique landscapes here, and we are trying to promote tourism, and we try to connect the communities also. After all, the community also should benefit. So that's our motive, and we are promoting tourism in all other areas also. You know, you've given me a story. Tourism, community and conservation. That's going to be another part of my story at the Tourism Futures. Very well said, so thank you very much. And my next question goes to Anirudh. Anirudh, you are Postcard Hotels is a very, very uniquely placed luxury, experiential, hotel special stays venture. You know, there is Taj Hotels, and there are other hotels, and then there is Postcard Hotels. And with respect to a destination, how are you bridging the perception gap? You know, like, you're not a large hotel chain, right? You are a very special stays, very luxury, very niche. So, you know, let us know, in Madhya Pradesh and in India, how are you planning to bridge that perception gap? Thank you for the question, Naveen sir. Morning, Mr. Shukla. Morning, everyone. I would like to take this opportunity to thank the state government team as well as the team from FICCI for putting this excellent show together. What an amazing show. Thanks for the question, Naveen. So the Postcard Hotel is one of India and South Asia's fastest growing luxury hospitality brands. In fact, our founder Kapil couldn't be here today with us because he's in Hong Kong to receive World's Best Emerging Luxury Hotel Brand Award at the World Travel Awards, you know, which is considered like the Oscars for the hospitality industry. And 9 Postcard Hotels are winning in different categories, you know, ranging from wildlife to, you know, by the beach, so on and so forth. So why a brand which is just about a 7-year-old brand
achieving all of this. This is only the beginning, and we've, frankly speaking, learned from the legends, legends like Mr. Oberoi, legends like Mr. Nair from Leela, Taj Hotels. These are legendary brands which are from India and have already showed and demonstrated so much. You'll have to be a bit brief because I've just been given 3 minutes. I've just got a reminder. Sure. So experiential luxury. That's right. So experiential luxury means the definition of luxury has changed. Luxury is no longer, just the butler service. So what Postcard is doing is we're not only, just running hotels, we're building and operating these stunning hotels in stunning destinations across India and South Asia, where it all starts from the design stage, the design, the architecture, the local communities who are building it, local cuisine, it's hyper-local, where the guest ultimately is able to say that this kind of an experience is something where I can put my finger and say, nothing like this exists anywhere else in the world. With regards to Madhya Pradesh, we believe Madhya Pradesh's wildlife is second to none, maybe just second only to Africa. So while you think of Masai Mara or the Serengeti, in the same breath, we want you to think of Madhya Pradesh. So we're building a collection of these ultra-luxury, high-end, wildlife lodges across different national parks of Madhya Pradesh, starting with Kanha, then coming in Pench, and very soon we'll be announcing another 2 more. State and brand coming together is a great example. So I would like to quote an example of Assam over here, and that's perhaps what we also try to achieve over here with Madhya Pradesh. So let me ask you a question. The most consumed beverage in the world is tea, right? Next to water. Look how well the Italians and French have marketed tea, the vineyards. And India, which is perhaps the mecca of the tea, we haven't done an amazing job. Sri Lanka, beautiful small country, they've done it better. So since 2018, the government of Assam was trying to work towards tea tourism, and they tried multiple things, didn't work. Just exactly about 2 years ago, they connected with us. The government gave us a certain rebate as well, almost about 2 crores. And within 18 months, the hotel was turned around there, which is one of the fastest one. And today it has emerged as one of the best, not just of Northeast, but of India. So opportunities of the state and brand coming together is a great example. What we're trying to build is the Sangeeta, the Belmont of India, the Aman Hotel of India. So high value tourism. A small country like Bhutan has more Aman Six Senses in one and only. Why not India? India has so much more to offer. So that's what we believe as far as hospitality is concerned. And from basically building the perception, bridging the perception gap is basically when the gems of the state come together with the private entrepreneurs, we will be able to make Madhya Pradesh a global icon. That's a great example. Rakesh, I'd like to now, I've been reminded of an overtime. So coming to you, you are operating a complete hotel tech platform for a leading online travel agency like Yatra. What is the responsibility today OTAs are taking, besides being transactional and being very aggressive in terms of building their own businesses by offering very, very special deals? Do you think OTAs need to have responsibility of building tourism and building a complete, and supporting the story of the country and the state? Because ultimately what matters and how you get business of airlines and hotels is to basically when the tourism progresses, whether it is a leisure tourism or a MICE or a bleisure, people eventually turn to OTAs at some point of time. And you track customer journey like nobody else. So what is the responsibility OTAs have in terms of building this entire, perception of country and of nation and conducting your business accordingly? Thanks, Naveen. Good morning, everyone, and thanks to MP Tourism, Mr. Shukla and team, and Vicky for inviting us here. We are very happy and excited to be here. OTAs as a responsibility, I think we have already started taking that. And there is one
big thing that we can do, and we have started and we have demonstrated also in one of the state. Uh, just don't go by the traditional definition of OT as an online travel agent. I think probably I think that needs to change. We are a tech company essentially, and through tech, we probably make the buying process, selling process, or probably we bring the various stakeholders together, right? That's the base essence. Through technology, any product, any service, any experience can be put together. I think one of the recent example, if I make quote, sir, and this has been done in the Rajasthan government, I am working very closely with various tourism boards. In fact, I was part of consultant team for Incredible India new website also, and there also my first suggestion was, let's not have just an informative site, because that won't help, that won't serve the purpose. Let's make it transactional. So I'm still in favor of transactional, but let's ensure that all stakeholders are part of this website. The customer sitting abroad, not only able to discover the various experiences and products that India has, but in a very hassle-free, seamless, he should be able to book it also, transact also, and there is a service desk and help desk also that can guide and protect him. Now, taking this idea forward, we have built an online booking management solution for Rajasthan government. It's a Rajasthan government initiative. We have only built, conceptualized, and executed. It's running for the last 1.5 years now. The platform brings all stakeholders together of the trade industry. So there are forts and palaces, museums, wildlife sanctuaries, there are guides, travel agents, tour operators, even hotels also, and I'll tell you how hotels. And travel goes beyond these known 5 or 6 major stakeholders. Travel also is shopping, right? When a traveler is coming, he would like to go to the bona fide places for shopping. He wants to experience the local cuisine also. So how do we ensure that all these products are available on one unified platform where a customer can come, he can book a fort or palace or wildlife, he can book packages, he can book basically the shopping experiences also, and then he can cancel also, he can get a refund also instant without any hassle, and then there is a service desk and help desk that can fulfill that. Let me share with you, I think last 5-6 years, and it's not a confidential data, I can quote it here. I think the Rajasthan government has done somewhere around 80 crore, the best. They gave us a target of 100 crore. In the first year, sir, we have crossed 200 crore. So, and all that has happened because there is a technology platform that has brought together everyone. It's a seamless journey, hassle-free journey. And something on the similar lines, we are now trying to work with other state tourism boards also. Probably will taking 1 more minute here. You said 13.4 crore is the overall traveler that have experienced Madhya Pradesh, out of which probably 10.7 crore has gone into the spiritual one. And out of that 10.7 crore in spiritual, 7.5 is probably Ujjain and 1 crore is in Chitrakoot, leaving very probably small for the rest of the segments. But if you look at the other products that we have, and we should be proud of, one is, my friend said about the wildlife, 11 nature parks, 26 wildlife sanctuaries, 9 tiger reserves. Madhya Pradesh should be called the tiger state of the India, right? And that's how it should be promoted. And this experience needs to be put together again by probably with the help of various stakeholders and tech company. There are 18 UNESCO, if I'm correct, sir, 18 UNESCO heritage sites, right? So all this products of heritage, wildlife, and the standard tourism products with the help of all stakeholders can be put together through a tech platform and can be then promoted. Because if all the products are on one unified platform, I think you will agree with me, it's very easy to promote, not only domestically, but internationally also. Thank you. No, very intriguing. I think that's a great insight, because you actually, the moment you have a unified platform for Madhya Pradesh, you will be able to basically highlight and showcase the diversity of this state to almost every person who visits the site, and has also enable him to transact. Rajan, last but not the least, I know you're about golf. It's not just about golf, but immersive tourism. While we've spoken about connectivity, hotel and airline collaborative marketing, state partnership, private-public partnership, we've spoken about almost everything. In your sense,
What are the steps Madhya Pradesh need to take to make the experience into Madhya Pradesh more immersive? I know they've done recently a festival of skydiving also here, which was covered in the week. But how do we make it more immersive? Yeah, good afternoon, everyone. Thank you, Madhya Pradesh, for calling us again and again. You know, the Madhya Pradesh Tourism and FICCI has done an amazing job by doing this MP to Travel Mart. And, you know, this is my 4th visit in last 3 months in Madhya Pradesh. We just did a spiritual tourism conclave in Ujjain. Last year, we did a heritage tourism conclave in Indore. And I remember immediately after COVID, there was a travel event and Shukla ji was the chief guest over there. When he was giving me the award, I said, sir, you have the only state where there is no golf course. So he said, I'll promise you that I will get you a golf course. And you know, within 3 months, there is a team from Madhya Pradesh Tourism who was there in Ashoka Hotel. I got them connected with lots of golf designers. And yesterday I came to know that 40 minutes drive from Bhopal airport, will be a golf course coming up, and which is very close to Sanchi. And you know, when Buddhist tourists are coming to see, for a Buddhist pilgrimage, out of 70% are golfers, you know. So if they have a golf course with Buddhist circuit, I think they will spend 1 or 2 nights extra. When a golfer travels with his 15 kilogram of golf bag, he wants to play at least 2 to 3 rounds. So you can imagine it will be 2 to 3 nights extra in Madhya Pradesh. And you know, sir, everybody is talking about marketing budget. It should be 200 crores. So very simple things are, you have delegates from 28 countries. You can take their feedback, a video interview. When they are leaving, you can take the interview. So if it is a Japanese tourist giving the experience of Madhya Pradesh, you can show this video in Japan. When a Japanese is giving a feedback of Japan in Japan, Japanese will believe more than doing any brochure or any presentations, you know, in their own language. Sir, in my last 35 years of travel trade, I have hardly used any foreign agent to get my incoming. I always do that through the, you know, value-added service which I give it to my customer. So they send me more customer because of that. So similarly, when I get golfers from UK, I send them on a 12 days tour of India with 5 rounds of golf. So when they were playing their last round at Delhi Golf Course, I took their feedback. So now whenever I am selling golf packages anywhere in the world, I send this video to them, not any itinerary or not anything, you know. So when they heard about Indian caddies, Indian golf courses, you know, they played at JP Greens and after 2 hours they are at Taj Mahal. So they said, we have never this kind of experience. So as you said, why you go into these kind of experience, I tell you, we do an international vintage car show every year in different parts of India where 200 vintage cars from all over the world comes. And you know, when we were doing at Red Fort, Sir Ratan Tata ji was very fond of vintage cars. So I got the chance to, you know, escort Rajan, him. have to be, Sir, I know, we can skip the lunch, but this is very important. You know, I had the chance to escort him for 1.5 hours. So you can learn from these people, you know. And when he was going around all the cars, there was a British couple who bought his car. It was worthless, you know, with gold lamp card. So Ratan Tata ji moved around his car and he went to the couple. He said, why you have changed the color of the dashboard, color of your dashboard? So this couple was amazed. He said, sir, this car is parked in London. How do you know that we have changed the color of this dashboard? He said, 2 years back, you bought this car to Pebbles Beach in California. And that time, the dashboard was in original color. So the couple was really bow down in front of Ratan Tata ji. So this is a learning for me that you have to go into deep. And when, you know, I take him to another car, that Maharani of Junagadh was there. She said, can I say hello to him? I said, I am very ordinary person, just escorting him. So the lady said, I am so-and-so from Junagadh. And Ratan Tata ji said, lady, I don't see you at my Taj pool in Mumbai these days.
So she was amazed, you know. So these kind of things which made me, you know, how to learn things from these people. And I think Madhya Pradesh has everything: heritage, spiritual, wildlife, forest, water bodies. So, and they are doing wonderful job. So this brings me to an end of this wonderful session. I think, thank you, Fiki, thank you, Madhya Pradesh Tourism, for creating such a wonderful panel. I mean, it's one of my best I've ever attended. And with this, I will like to give a closing tagline. My opening tagline was temples, tigers, timeless tales. And my closing tagline is create, communicate, and collaborate. Thank you very much, everybody. Thank you so much. Thank you so much, sir. It was a very fruitful session, which we all have attended here. Now, I would like to request Ms. Neelam Rawat ma'am to please come forward and give the gift hampers to all the dignitaries on the dais. I request you to first hand over this beautiful gift hamper to Shri L.N. Krishnamurthy, sir. Everybody is here for a group photograph. एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मंचासीन सभी अतिथियों के लिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी आप सभी से, कृपया आप सभी मंच पर ही रहें। एक छोटा सा टोकन ऑफ लव, एक गिफ्ट हैम्पर मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से मैं निवेदन करती हूं। नीलम रावत मैम हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, जो हमारे सभी मंचासीन अतिथियों को एक गिफ्ट हैम्पर भेंट कर रही हैं एमपीएसटीडीसी की ओर से। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल तो कहा ही जाता है और यहाँ पे जो भी किया जाता है बहुत प्यार से किया जाता है। ये गिफ्ट हैम्पर्स भी बहुत ही प्यार से आप सभी के लिए असॉर्ट किए गए हैं, क्यूरेट किए गए हैं। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि कृपया आप सभी ये गिफ्ट हैम्पर्स प्राप्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। और अब कुछ ही देर बाद हम हमारे अगले पैनल डिस्कशन की ओर बढ़ेंगे। बस 5 मिनट का यहाँ पर हम विराम दे रहे हैं और उसके पश्चात हम हमारे अगले पैनल डिस्कशन की ओर बढ़ेंगे। अगला पैनल डिस्कशन बहुत ही खास है। मुझे पता है कि कई सारे लोगों की रुचि जो है फिल्मों में होती है। कहते हैं जो हम याद करते हैं वो तो हमें याद रहता ही है, लेकिन जो हम देखते हैं वो हमेशा के लिए हमारे जहन में बस जाता है। ऐसा ही जो हमारा अगला टॉपिक है वो होने वाला है फिल्म क्षेत्र के कई बड़ी हस्तियां, दिग्गज चेहरे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे, जो मंच पे एज अ पैनलिस्ट हमारे साथ बैठेंगे और फिल्म की नीतियों के बारे में विभिन्न विषयों पर, विभिन्न प्रश्नों पर वो उत्तर देंगे। चर्चाएं यहाँ की जाएंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है अगला सेशन आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि अगले 5 मिनटों का जो हम विराम दे रहे हैं उसमें व्यवस्थाओं को बनाने में हम सभी का सहयोग करें, अपने अपने स्थान पर बने रहें। अगले 5 मिनटों में हम हमारा अगला पैनल डिस्कशन यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर अबाउट टू स्टार्ट अवर सेकेंड पैनल discussion in nearby 5 minutes. I request each and everybody of you to please kindly be seated on your respective seats. The topic of second panel discussion is the future of the film sector in Madhya Pradesh, from real to real growth. Madhya Pradesh stands at a pivotal moment in its cinematic journey, having already established itself as a sought-after destination for acclaimed films and OTT productions. The state is not poised to become a global hub for film industry. With its rich cultural heritage, diverse landscape and architectural marvels,
Madhya Pradesh offers immense potential for future filmmaking opportunities. This session will explore how the state can build on its current momentum, attract international production, strengthens its film infrastructure, and develop talent pipelines driving sustainable growth in local tourism, employment, and the creative economy.
रजिस्ट्रेशन के बाद वीडियो प्ले होगा और उसके बाद फिर मॉडरेटर अरे मैंने नहीं दिया ना, जो कम से कम मेगा जिनने दिया वही
मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सभी पैनलिस्ट और मॉडरेटर को। तो देवी और सज्जनों, आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। गेट रेडी टू वेलकम शिवांकित सिंह परिहार। ही इज फ्रॉम सतना, मध्य प्रदेश, जिनकी शुरुआत थिएटर से हुई और 2011 में उन्होंने मुंबई आकर एक्टिंग को अपना लिया। टीवीएफ में एस्पिरेंट्स में गुरी का किरदार जितना जानदार रहा, उससे ज्यादा उनकी सिंसियरिटी और इमोशनल डेप्थ ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनका नया प्रोजेक्ट सिक्सर भी आपको चौंका देगा, जहां उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ राइटर और क्रिएटर की भूमिका निभाई है। नेचुरल एक्टिंग, शार्प कॉमिक टाइमिंग और ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग, ये सभी चीजें उन्हें एक अलग मुकाम देती हैं। देवी और सज्जनों, आज हम उनके इस सफर से प्रेरित होने वाले हैं और जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे श्री शिवांकित परिहार जी का। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शेखर शुक्ला जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर। कृपया मेरा निवेदन है आप मंच पर आए। श्री शुक्ला जी ने मध्य प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनकी दूरदर्शिता से मध्य प्रदेश ने एक नया पर्यटन आयाम प्राप्त किया है। उनका नेतृत्व और प्रतिबद्धता यहाँ के सांस्कृतिक एवं पर्यटन क्षेत्र को समृद्ध करने में मार्गदर्शन और नया आयाम सिद्ध हुआ है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आपके द्वारा बनाई गई नीतियों को देश भर में सराहा गया है और साथ ही कई लोगों ने आपसे और राज्य से प्रेरणा भी ली है। जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करेंगे श्री शेखर शुक्ला जी का। साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री बुद्धिशा मुखर्जी मैम को। 2015 बैच की IAS ऑफिसर हैं आप, अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को आगे लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेशनल अर्बन वाटर अवार्ड विजेता, जो अपने नवाचार और प्रभावी नेतृत्व से मध्य प्रदेश पर्यटन को वैश्विक पहचान दिला रही हैं। और अब मैं आप सभी की करतलध्वनि के बीच आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री मोनिशा आडवाणी जी फ्रॉम ईमे एंटरटेनमेंट। मोनिशा आडवाणी प्रोड्यूसर पार्टनर और CEO ईमे एंटरटेनमेंट की अगुवाई करती हैं, जो भारत के प्रमुख प्रोडक्शन हाउस में से एक है। उनके नेतृत्व में एयरलिफ्ट, बाटला हाउस और मिसेस स्ट्रैटेजी वर्सेस नॉर्वे जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को लोकप्रियता मिली है। जोरदार तालियां हो जाएं मोनिशा आडवाणी जी के लिए। और अब हम सभी स्वागत करना चाहेंगे श्री गजराज राव जी का। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्री गजराज राव, एक ऐसे कलाकार जिसने दिल्ली के थिएटर से शुरुआत की और आज सिनेमा, डिजिटल कहानियां और एड फिल्म्स में अपनी एक अलग दुनिया बनाई है। बधाई हो जैसी फिल्मों ने उन्हें देश भर में एक अलग पहचान तो दिलाई ही है, साथ ही साथ कोड रेड फिल्म्स के सह संस्थापक के रूप में 650 से अधिक क्रिएटिव कैंपेन भी आपके द्वारा तैयार की है। तो जोरदार तालियां पुनः श्री गजराज राव जी के लिए। साथ ही साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री सुनीता राजवार जी को। सुनीता चंद्र राजवार एक अकम्प्लिश्ड इंडियन एक्ट्रेस हैं, जिनका फिल्म, टीवी, थिएटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में शानदार योगदान रहा है। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी। आपका किरदार चकली एक चालीसा की लास्ट लोकल में बेहद पसंद किया गया है। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हम बिट्टू की मम्मी उर्फ सुनीता जी का। और अब हम साथ ही साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे स्वानंद किरकिरे जी को, प्रसिद्ध भारतीय गीतकार, लेखक, गायक, पटकथाकार, लेखक, अभिनेता, मध्य प्रदेश में जन्मे, NSD दिल्ली के छात्र, 2007 में लगे रहो मुन्ना भाई, 2009 में 3 इडियट्स के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। आपके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख गीत हैं जो हम सभी को बेहद पसंद है। बाबरा मन देखने चला एक सपना, बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए, रंग दे बसंती, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, परिणीता, लगान और ऐसे अनेकों गीत आपके द्वारा लिखे हुए हैं। साथ ही साथ आप मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिसेस एना सोरा, स्पेनिश फिल्म प्रोड्यूसर हैं आप। मिसेस एना सोरा is an prominent Spanish film producer known for producing the recent Spanish-Indian co-production Madras। और साथ ही साथ आप Mr. Carlos Saura, one of Spanish greatest filmmaker and the recipient of the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award in 22। साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ मिसेस लारा मोलिना फ्रॉम स्पेन फिल्म कमीशन। मिसेस लारा मोलिना इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द नेशनल नेटवर्क ऑफ मेंबर्स ऑफ स्पेनिश फिल्म कमीशन, प्लेइंग अ की रोल इन प्रोमोटिंग स्पेन एज अ प्राइम डेस्टिनेशन फॉर फिल्म प्रोडक्शन। और अब तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर विशाल पूरिया, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध निर्देशक हैं। विशाल पूरिया इज अ टैलेंटेड इंडियन फिल्म मेकर नोन फॉर हिज वर्क इन हॉरर एंड थ्रिलर। जोरदार तालियां हो जाएं। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली रिलीज आपकी फिल्म मां सभी के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है। जोरदार तालियां हो जाए। मंच पर पधारे हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और
मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री नीलम रावत मैम को कि मंचासीन सभी अतिथियों का आप स्वागत करेंगे। मध्य प्रदेश का जो रिवाज है, हम अंग वस्त्र भेंट कर कर यहाँ पर हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो अंग वस्त्र आप देख रहे हैं, जो स्टॉल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बेहद खास है। मध्य प्रदेश की पहचान महेश्वरी से ये यहाँ पर लाए गए हैं, बेहद खास है ये। और साथ ही साथ जो स्मृति चिन्ह आपको भेंट किया जा रहा है, ये सुपारी के बने हुए गणेश जी हैं और रीवा में ये बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रचलित है और ये स्मृति चिन्ह के रूप में आपको यहाँ पर भेंट किए जा रही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमेशा आपको ये याद रहेगा कि आप मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश की खास पहचान आपको स्मृति चिन्ह के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ पर भेंट की गई। ये बेहद ही खास पल हम सभी के लिए। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारा जो आज का टॉपिक है इस पैनल डिस्कशन का, वो भी बेहद खास है। ये खास टॉपिक है रील से रियल ग्रोथ तक मध्य प्रदेश में फिल्म सेक्टर का भविष्य। ये बेहद खास टॉपिक जिस पर आज यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। आज का ये सत्र इस बात का प्रतीक है, इस बात पर केंद्रित रहेगा कि किस प्रकार सिनेमा की दुनिया अब सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की दिशा में भी नया अध्याय लिख रही है। मध्य प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विविध संस्कृति और फिल्म फ्रेंडली नीतियों के कारण आज देश और दुनिया के फिल्मकारों की पहली पसंद बनता जा रहा है। ये न केवल फिल्मों की शूटिंग के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि रोजगार, पर्यटन और स्थानीय प्रतिभाओं के लिए नए अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वास्तव में ये बदलाव रील से रियल ग्रोथ की दिशा में प्रदेश की मजबूत कदमताल का प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज काइंडली टेक योर सीट्स। और ये बेहद महत्वपूर्ण विषय और मुझे पूरी उम्मीद है जो पैनल डिस्कशन होने वाला है वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगा ही करेगा। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है टेक्निकल टीम से कि एक वीडियो तैयार किया गया है। मेरा निवेदन है कृपया आप सभी उस वीडियो को प्ले कीजिए, बेहद खास वीडियो, और उसके बाद हम आज के इस पैनल डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। They say a good location is half the story. But what if your entire story found its soul in one place? Welcome to Madhya Pradesh, the heart of India, where every stone, shadow and skyline feels like it was made for the lens. Here, history doesn't sit in museums, it moves. It breathes through the carvings of Khajuraho, echoes in the primordial silence of Bhimbetka, rises from the stillness of Sanchi's stupas. Try Gwalior, where every rampart sings of rebellion and music still lingers in the air. Kanha and Bandhavgarh offer nature in its most cinematic form. Let Panchamarhi's misty cliffs and Morena's ancient valleys draw you in, where temples like the Chaunsat Yogini rise like forgotten sets, waiting for a story. We've housed kings, saints, and now we await storytellers. Because MP doesn't just feel like a film set, it is one. This land has been camera ready long before the first action. And maybe, just maybe, it's no accident that the Narmada is the only river in India that flows west. Because perhaps Madhya Pradesh has always been flowing toward the world. To you, your cinema, your vision, your lens. An MP is not just inviting you to shoot here. We are here to help make it happen. Over and above the support from the Government of India, Madhya Pradesh offers additional, exclusive incentives, seamless permissions, dependable crews, welcoming locals. From your first scout to your final cut, MP stands with you. Reimagine your next masterpiece in the heart of India. We love your cinema. We'll love it even more when you shoot it here. Madhya Pradesh, the heart of incredible stories. Let's roll.
ये तालियां तो बनती ही हैं क्योंकि मध्य प्रदेश इस देश का दिल तो है ही, लेकिन आज मध्य प्रदेश अपनी फिल्म नीतियों के लिए भी जाना जाता है। तो जोरदार तालियां एक बार मध्य प्रदेश की फिल्म नीतियों के लिए जिन्होंने बनाया है, उनके निर्मित करने के लिए। और अब मैं शिवांकित जी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप इस सेशन की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच। हेलो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद जो आप रविवार को आए हैं आप यहाँ से। मेरा पहला सवाल, मैं इसके पहले सवाल पूछे बताना चाहता हूँ कि मैं एमपी का ही लड़का हूँ और मेरा पूरा बचपन एमपी में बीता है, तो इसलिए बहुत नज़दीकी है एमपी से, क्लोज टू हार्ट है। इसलिए मैं चाहता था कि मैं आऊँ यहाँ इस मंच पे और इन सारे लोगों से सवाल पूछूँ, और ये जब मौका मुझे मिला तो मैंने तुरंत हाँ किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। तो मेरा पहला सवाल है विदिशा मैम से। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि मध्य प्रदेश की जो पर्यटन नीति है 2025 में, वो आज की डेट में 2025 में हमारे जो निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर्स हैं अलग अलग शहरों में, मुंबई में खासकर, उन्हें क्या लाभ दे रही है, और जो इंटरनेशनल मार्केट है उस तक हम कैसे पहुँच रहे हैं, हम क्या कदम उठा रहे हैं ताकि इंटरनेशनल फिल्म मार्केट जो है उसको हमारे स्टेट के बारे में, एमपी के बारे में पता चले। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम लोग काफ़ी खेद प्रकट करते हैं कि हमने ये सेशन लेट स्टार्ट किया। अब बात करें अगर आपके क्वेश्चन की, तो जैसे मैडम विद्या बालन कहते हैं कि फिल्मों में क्या वर्क करता है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। अगर मध्य प्रदेश में क्या वर्क करता है और क्या कारण है कि हम फिल्म फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहे हैं, तो उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है हमारा गिल्ड फ्रेंडली पॉलिसी, जो कि अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ आवर ACS सर और हमारा फिल्म फैसिलिटेशन सेल लेड बाय राम तिवारी जी, इनके कारण हमने बहुत ही बढ़िया फिल्म पॉलिसी बनाई है। सेकंड है हमारा हाईलाइट, वो है हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और थर्ड है हमारा एग्जॉटिक लोकेशंस और हमारे नॉन फिजिकल इंसेंटिव्स। अब अगर हम फर्स्ट बात करें हमारी पॉलिसी की, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इस बार 2.0 वर्जन हमारे पॉलिसी का लॉन्च किया है। इसके मेजर हाइलाइट्स, यस, हम इंसेंटिव्स, कैपिटल ग्रांट्स हमारे वेब सीरीज़ को, हमारे फीचर फिल्म्स को, हमारे डॉक्यूमेंट्रीज़ को और हमारे टीवी सीरियल्स को, इन सभी को हम दे रहे हैं। पर हमारे इस पे हमने एक स्पेशल फीचर ऐड किया है, वो है हमारा शॉर्ट फिल्म्स। शॉर्ट फिल्म्स में अभी हम देख रहे हैं बहुत सारा क्रिएटिविटी, बहुत सारा इनोवेशन और बहुत सारी स्टोरी टेलिंग आ रही है, तो इसलिए हमने इस नए कैटेगरी को इसमें ऐड किया है। इसके अलावा हमने ऐड किया है विमेन सेंट्रिक फिल्म। अगर आप विमेन आधारित मूवीज़ बनाते हैं तो हम आपको एडिशनल इंसेंटिव देंगे। अगर आप चाइल्ड सेंट्रिक मूवीज़ बनाते हैं तो हम आपको एडिशनल इंसेंटिव देंगे। अगर आप हमारे लोकल हीरोज़ पे, हमारे ट्रेडिशंस पे, हमारे कल्चर पे बनाते हैं तो हम आपको एडिशनल इंसेंटिव देंगे। अगर आप हमारे लोकल टैलेंट को यूज़ करते हैं तो हम आपको एडिशनल इंसेंटिव देंगे। रीजनल सिनेमा को बूस्ट करने के लिए हम पहले 4 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की मूवीज़ को हम सपोर्ट दे रहे थे। इस बार हमने उसमें 2 नए एडिशन किए हैं, जिसमें कि हमने मराठी और बांग्ला, ये दोनों फिल्म्स को भी हमने एडिशनल इंसेंटिव के लिए किया है। इसके अलावा अभी बात हो रही है बहुत सारा ज़ीरो एमिशन की, कार्बन फ्री, सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस की। तो अगर आप कोई फिल्म ग्रीन रिवोल्यूशन पे बनाते हैं, आप ग्रीन प्रैक्टिसेस पे बनाते हैं, तो हम उसमें आपको एडिशनल इंसेंटिव देते हैं। इसके अलावा अगर आप फिल्म सिटी लेकर आ रहे हैं, अगर आप हमारा जो पुराना सिंगल स्क्रीन सिनेमा, जो कि वी डोंट वांट टू डाई, लेट दैट नॉस्टैल्जिया डाई, तो हम उसके रेस्टोरेशन के लिए भी हम आपको कैपिटल सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा जो हमारा सेकंड फीचर है, जो मैं बात कर रही थी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये फिल्म शूटिंग परमिशंस को हमने हमारे लोक सेवा गारंटी एक्ट के तहत अब टाइम बाउंड क्लियरेंसेस हम करते हैं। 15 दिन में हम आपको शूटिंग परमिशन देते हैं। और वैसा ही हम आपको ऑनलाइन प्रैक्टिसेस के तहत हम आपको सब्सिडी भी है, आप जो क्लेम करते हैं वो भी हम आपको ऑनलाइन हम आपको सुविधा उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो नॉन फिजिकल इंसेंटिव्स है, उसमें अगर आप देखें तो हमारा अभी विजनरी लीडरशिप, हमारा पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट, हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्वाइट स्टेबल, और उसके अलावा हमारे एग्जॉटिक लोकेशंस। आप
हेरिटेज शूट करना चाहते हैं, आप हमारे चंबल रवाइन शूट करना चाहते हैं, आप हमारे रिवर शूट करना चाहते हैं, आप हमारा वाइल्ड लाइफ शूट करना चाहते हैं, वी हैव प्लेथोरा ऑफ वैरायटी ऑफ लोकेशंस। और उसके अलावा जो मेन हमारा हाईलाइट है वो है हमारे यहाँ के शानदार जानदार लोग। अभी हमारे यहाँ कुछ दिन पहले पंकज त्रिपाठी जी आ रहे थे, मैं बार बार कहती हूँ, और उनकी पूरी स्त्री की शूटिंग हो रही थी, तो उनका एक अपना एक्सपीरियंस था कि जब वो शाम को शूट करके आते थे और पूरा हाट बाज़ार लगा होता था, लोग अपने हाट बाज़ार में अपने तरीके से बेचते रहते थे और वो लोग आते थे जाते थे और कहीं पे भी उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं किया, उनको कोई परेशान नहीं किया, लोगों ने उनको हेल्प किया, शाम को वो अपने कुजीन्स बना के उनको खिलाने चले जाते थे। तो वो जो शानदार जानदार मज़ेदार लोग हैं, ये हमारा यूएसपी है। तो आखिरी में मैं कहना चाहूँगी कि हम चाहते हैं कि गिल्ड टू बी सपोर्टेड, इंस्पायर्ड एंड क्रिएटिवली एम्पावर्ड। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। अगला सवाल मेरा शुक्ला सर से। सर, मैं टीवीएफ में काम करता हूँ, वहाँ हम लोग जब भी राइटर्स रूम में बैठते हैं या जब शूट होने वाला होता है तो लोकेशन की लिस्ट आती है कि ये लोकेशन है, और जो भी वहाँ लाइन प्रोड्यूसर बैठे होते हैं वो सबसे पहले बिना झिझक के ये कहते हैं कि अरे एमपी में कर लेंगे, अरे भोपाल है ना, अरे इंदौर है ना। तो एक तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये कंफर्ट जो क्रिएट हुआ है मुंबई जैसे शहर में एक रूम में बैठ के लोगों का, जहाँ पे उनको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार अगर ये लोकेशंस हैं, ये सारी लोकेशन में एमपी में मिल जाएंगी, इंदौर में मिल जाएंगी, आसपास मिल जाएंगी, भोपाल में, वो इन्वायरमेंट मुंबई तक कैसे क्रिएट हुआ है सर? वो यहाँ क्या ऐसा काम हुआ है कि ये इन्वायरमेंट उस शहर में ये क्रिएट हुआ है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। So I will talk in English for the benefit of my friends Laura and Anna. Okay. Yeah. Because they don't understand Hindi, and some of the important things which Bidisha said, I will tell you off the stage when we go down, because that's very important. Your International Film Commission, and you must know what we are doing. So coming to your question, yes, of course, Madhya Pradesh otherwise also is a very peaceful state with very welcoming citizenry, and people here are very, very, sort of self-centered. They're not much bothered. Some shooting happening somewhere, they will just go pass by, and they won't bother anybody. So that's one major factor which has enabled filmmakers to come here and shoot easily. The second factor is about some very good lineup of line producers who have emerged in Madhya Pradesh in last decade, and they're doing wonderful work. And the way they handhold film producers and the kind of comfort they give is definitely outstanding. And I must praise them that they are the ones, one key, linkage between the film community and the government. From our side, I would say that we are simply alive to the expectations of the film community. We are always eager to hear them out, and we are always there round the clock 24/7 for anything, any requirement which can be fulfilled within the legal framework. And for locations, people say that why don't you go for some kind of a film city? So I tell them, and our self-proclaimed brand ambassador, even Pankaj Tripathi, he has become a brand ambassador on his own volition. He also says that here is a film city, 1,000-year-old, 2,000-year-old, in Chanderi, in Khajuraho, in Maheshwar. These are film cities created 1,000 years ago. And why to create a new film city? Everything is there. So one has to simply come and explore and do the shooting over there. So number of locations are there. We have good coordination with all the other line departments, be it ASI, be it any other government department, where the shooting has to happen. We give them the comfort of seamless integration and single window permission system, which enables them to come and do their business without any problem and go back happy, and also relive and enjoy of their their stay here in Madhya Pradesh. That's all. So adding to this, sir, you spoke about, for example, the heritage of Orchha, for example, Gwalior,
or maybe the heritage forest of Kana, Bandhavgarh, Sanjay Gandhi National Park, or Pachmani. So I just want to know this thing, that how are we aligned and how are we conveying this to our international film market, where they know about this, all these heritage and this culture of MP. What steps we are taking so that this information reach to international filmmakers? When we go to any other country to promote Madhya Pradesh in tourism forums, we try to get in touch with the film commissions there, the film community, film fraternity over there, and make small presentations about the kind of offerings which we have for them. And also tell them international film projects are very welcome in Madhya Pradesh for two reasons. One is, of course, the ease of film shooting here, that is one. But another is financial incentives. That's very important for them. As Government of India has already opened its doors for international shootings by giving a very handsome incentive, I think 25 or 30 crores, 30 CR up to 25% of the COP, cost of project. We are topping it up by giving 10% of cost of project, maximum 10 CR. So if you're making a 100 CR film, 40 CR you get back in your pocket if you shoot in Madhya Pradesh. And it goes seamlessly. So these are the kind of things which we tell them, attract them, and here you see our efforts. Recently we went to Dubai and Spain. We talked to people over there. John Emmanuel, he came to meet us. We had a prefix meeting. We went with the CM's delegation, and we signed an MOU with the Spanish Film Commission over there, and that is how Anna and Laura are today sitting with us. They came here to explore Madhya Pradesh. I'm very sure they go back and they give their feedback to Spanish Film Commission, and more Spanish projects are going to come our way. Thank you so much, sir. Thank you so much. My next question is to Monisha ma'am. Ma'am, first of all, ME Entertainment has been instrumental in shaping quality cinema and web content, and me personally being a fan of Freedom at Midnight, I can easily say it's one of the best shows our country has made. Thank you. So congratulations for that. So I want to know, from your perspective, how can states like MP create structured opportunities to mentor and develop local youth, and also enabling them to grow within the film content sector? I think that's a very good question. Firstly, thank you for having me here. Madhya Pradesh feels like home because we've had the wonderful opportunity to shoot here. We continue to, as we speak. I have a unit right now who is shooting tirelessly and supported by the wonderful youth as well as infrastructure of Madhya Pradesh. I want to say this to you through personal experience. We've had the wonderful opportunity to shoot in different parts of the country. What has now made it stable for every production of ours to evaluate Madhya Pradesh first is really the 3 C's, I call it. One is connectivity, and connectivity for me is not just about logistics of transport, but it's also the ease with which we are able to do business with the authorities here, the policymakers here. And so to second what you said, it's really been our experience that there is accountability from the top, not just at the bottom. I think the second thing for us is the fact that we get great customer service here. Again, that comes from the youth, and like Shukla ji just mentioned, the line production quality here, they make it a point to completely become personable. They make sure that they make every person, every part of the unit feel at home and comfortable. I think that comes not just from training, that really comes from the DNA of the state, the culture that is here. And so Atiti Deva Bhava, which is our guest is our God, really is something that is experienced here by crew who come here and consider this to be home for the time they're shooting. And I think for me, the third thing is commerce. I think what Madhya Pradesh has started, and I'm hoping Shukla ji is not the cap to it, we see this only improving with the prosperity that comes to the state. And for that prosperity, we need to shoot more here. So I'm glad to have my Spanish compatriots here so that we can encourage more of international cinema also to set the path. As far as the youth are concerned,
I think that there's a great initiative taken in creating the arm of the NSD here. And I think it's good to have performers, but I also believe, and I was talking to Shukla ji about this, we need to invest in getting more people invested in production. It's one thing to have the right attitude and intention, it's another thing to have the skill. And I think that that is something that we as a nation need to invest. And I think if Madhya Pradesh takes the initiative in creating, starting with labs, going on to associate programs, I think people will be proud to call themselves part of productions and call themselves producers. And I think if you were to look at the final contribution that we need from building infrastructure is technology. Very, very quickly, things are changing. And our sets are getting replaced. There's no reason why it has to be that 1,000-year-old film city that exists, many film cities that exist in Madhya Pradesh are left out. We just need to embrace technology that only projects them better and brings them forward. There are greater details that we can go into, but I think there's a great learning opportunity to mentor and develop youth here, and the commitment you've made to the sector means that we need to do this as well. Adding to this, ma'am, Thank you. Adding to this, while the behavior of audience is changing because of streaming platform, OTTs and all. So earlier, for example, if I have to show Bhopal, I'll shoot an aerial shot of Bhopal and then I'll cut to somewhere in the studio, Mumbai. But now, after the streaming platform, OTT, audience is looking for the realistic scenes, realistic locations. They know this is not Bhopal, maybe, for example. So do you think, what business model do you see which is working best for production houses, for example? If you want to come and shoot here, then how it's working for you? So there are two parts to what you asked, and I'll just try and compress it and tell you how I interpret it. You know, when we started working in this business 15 years ago, I thought it was all about the actors, because like yourselves as a consumer, I हमेशा poster देख के, I would see a poster and I would say, this is why I want to watch a movie. And then when you make a movie, you realize it's about the frame. Because what people remember is, at the end of the day, the entire frame of this wonderful language and art called cinema, right? And if we look at what goes into making that frame, it's not just what you talked about, which is it a scene in Bhopal which suddenly cuts to a place in Mumbai? It's that entire experience that is captured. So I don't think there is a situation where if we leave an audience questioning where and the authenticity of what we've done, then I'm going to turn to Vishal, because he's the filmmaker on the panel over here, and say, do your job better, right? But actually, at the end of the day, it's a responsibility that all of us bear. And I think that when a state like Madhya Pradesh is willing to put itself forward and help every aspect of that frame, every contribution on that frame, I think we will have more and more people who will be looking at just the experience and the emotion that we're communicating, rather than being critical and questioning what is different. Nicely put. Thank you, ma'am. So my next question is to Mrs. Anna. Hello. So first of all, your country is beautiful. I had the opportunity to visit Spain, and let me tell you, the country is really beautiful. So, thank you. Yeah. And yeah. So I promised myself every time I'll go to Europe, for example, I'll definitely visit Sagrada Familia, because I'm in love with the Gaudi's art. So my question to you, Spain has successfully positioned itself as a hub for international co-productions. And what aspects of Spain's film ecosystem, as location promotions and incentives or infrastructure, do you think could be adapted to help MP to attract more global filmmakers? Okay, so first of all, thank you so much for having me, for having us. We are very happy to be here in India. Our country is very beautiful too. We love India. Thank you. So about your question, and we've been talking about that before with Monisha. No? I think in Spain, what we have, not in advance, because in India, no, you know, in Bollywood you have, if not the biggest, one of the most big industries in the world, bigger than the Spanish one. But
in Spain, we're very open to make our productions with Europe, also with LATAM. It's very historical. From the very beginning, it was a need, because in Spain we had very dark times a few years ago, not a few, but 50 years ago, with the dictatorship. So many Spanish directors and artists, they have to left. They left to France, they left to Mexico. So that's why in Spain we start making some co-productions with these countries. And nowadays in Spain, this is something very usual because of the language, of course, with LATAM, but also because we found the stories that travel, the stories that we can share with Europe, that we can share with LATAM, and we can share with all over the world. So I think this is something that maybe in India you didn't do that yet, because in India you have a huge audience in the country. You are very lucky because the Indian people, you love to go into the cinema, to the theaters. In Europe, in Spain, we don't have that luck. So I think this is something that maybe you should work on. We are already working on it. We're making the first Spanish-India co-production. I'm making it, and I'm very happy. I'm very proud of that because we're trying to open these new ways. We're trying to build these bridges with you in India, but I think you also have to push that. Going to markets, bringing people to India, not only to Ifigoa, of course, to Ifigoa, but also to Madhya Pradesh, to Bombay, to show how you do the things, to show how you work, because working with you, it's something very easy. You have really good services in India. I found very, very talented people. So I think it's more a question about bringing the people from Spain, from Europe, from LATAM, and this is something that we are trying to do with the Spain Film Commission. Lara is going to talk about that before. But if you do that, I think you can make big films and you can take your films to the big film festivals all over the world and sell your movies around the world, not only in Spain, but also in Europe, LATAM, States, and the rest of the world. Lovely. So adding to this, I have one more question for you. That what role do international film festivals, co-productions and partnerships play in building a country's reputation as a film destination? And how can Madhya Pradesh use such strategies effectively? Yeah, I mean, it's on the same line that my last answer, but I think it's very important to promote the production, the cinema, but not only promoting the shootings. Of course, the shootings are very important, and it's when you can bring a lot of people and make expenses in the country and use all the ecosystem that you are building. But also, I think it's very, very important to make these kind of things, these panels, also to push or try to promote the education on cinema, to promote the short films, as you said before, the documentaries, the fiction, the animation. I think it's very, very, very important. Not important, but very where you can make big things. But these things, when you start building these small things, then you can build something, a huge ecosystem. So for Madhya Pradesh, it's a really nice place. We just arrived yesterday in the morning, but we had the opportunity to see just a bit, but also with the videos from that people yesterday and the video that we saw today, but also meeting people from Madhya Pradesh. You have everything here, everything. Nice weather, nice people, nice food, nice services, nice tax incentives, that of course it's important, no? So what I think it can make that you bring more shootings, more industry to this area, it's to do that, to do like panels like this one, to bring people to show the locations, to promote the education, maybe to try to make some agreement with a European or Spanish or from LATAM or from wherever all over the world, agreement with the universities, so you can make the opportunity to the new generations to know the place, to start doing their projects, because maybe at the beginning, it's a short film, but then maybe in 5, 10, 15 years, it's a big film. So that's what in Spain, I think we're doing it very, very well. Also the Spain Film Commission, also all the different regions in Spain, they are pushing for for the industry. Of course, it's not a huge, big industry in each region, but when you do it in many places, different places, then you create a big one. So that's what I think you can start doing. Of course, you're already doing it, but you can try and continue pushing that,
because it's the way that you can attract shootings, you can attract students, you can attract filmmakers, and of course, I would love to come back again, and I would love to shoot here, to explore the area, to explore the cities, and so for the next time, we will stay more than 1 day and a half. Thank you so much. Thank you so much, Anna. तो मेरा अगला सवाल है गजराज सर से। गजराज सर, आपकी शुरुआत अगर कहें फिल्मों की तो वो चंबल से हुई, एमपी। बैंडेड क्वीन, यस जी। तो आपकी शुरुआत वहाँ से हुई, उसके बाद रिसेंटली दुपहिया आती है, और उसके बाद थाई मसाज आती है जो इंदौर की कहानी है, दुपहिया जो यहाँ शूट हुई। तो मेरा सवाल आपसे सर ये है कि जैसे हम एक्टर हैं अगर, और हम एक ऐसी लोकेशन में शूट कर रहे हैं जो हमें बोला गया है कि एमपी है, बट हम मुंबई में शूट कर रहे हैं या वहाँ कहीं शूट कर रहे हैं, तो एक एक्टर के लिए कितना ज़रूरी होता है वो ऑथेंटिसिटी फील करना, कैरेक्टर की, स्टोरी टेलिंग की। अगर वो रियल लोकेशन में आके, अगर कहानी मध्य प्रदेश की है तो वो एमपी में ही आके शूट हो रहा है, तो एक एक्टर के लिए कितना ज़रूरी है वो ऑथेंटिसिटी, वो डेप्थ लाना कैरेक्टर में, स्टोरी टेलिंग में, अगर हम रियल लोकेशन में आके ही शूट करते हैं? जी, तो सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया, शुक्ला जी और तिवारी जी, कि मुझे यहाँ पे बुलाया। तो मेरा एक सबमिशन है, मैं शिवांकित ने जो सवाल किया उसका जवाब दूँ। मैं जितने थोड़े बहुत सरकारी आयोजन मैंने अटेंड किए हैं और जितना सुना है, तो उसका बहुत ऐसा आमतौर पे मैंने देखा है कि सरकारी कार्यक्रम जो होते हैं वो कागजी कार्रवाई जैसे होते हैं, मतलब खाना पूर्ति जैसे होते हैं कि हाँ ये एक ऊपर से आया है तो इसको कर दिया जाए, और यस मैन वाला होता है। लोग खौफ में होते हैं, बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी बड़े अधिकारियों के खौफ में होते हैं, बड़े अधिकारी अपने से ऊपर वालों के खौफ में होते हैं, और एक अजीब सी हड़बड़ाहट होती है, सिट्टी पिट्टी गुम होती है, लोग भाग रहे होते हैं हेडलेस चिकन की तरह, जिसको कहा जाता है ना अंग्रेजी में, कि मतलब पता नहीं है, कोई लेट हो गया, थोड़ा 10 मिनट फंक्शन लेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें एक बेसब्री हो जाती है। मैं 2 दिन से हूँ यहाँ पर, सारा कोऑर्डिनेशन, और ऑब्वियसली इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो 10-15 मिनट 20 मिनट आगे पीछे होता ही है टाइम, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कहीं पर भी किसी भी अधिकारी की, किसी भी कर्मचारी की सिट्टी पिट्टी गुम नहीं हो रही है। घबराए हुए लोग नहीं हैं, डरे हुए नहीं हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मेमो मिल जाएगा इसके बाद, यार क्या करें अब, ये वो तिवारी जी ने बताया था, काम नहीं हुआ। तो मेरा सबमिशन है ये कि मेरे लिए ये देखना बड़ा सुखद है। जैसे मैं हिंदुस्तान लीवर के एड फिल्म शूट करता हूँ, उनकी कंपनी में जाता हूँ, या टाटा मोटर्स की एड बनाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, और वहाँ पर जिस तरह से लोग डिसिप्लिन में तो होते हैं लेकिन अपने निर्णय ले रहे होते हैं, डरे हुए नहीं होते हैं, इसी तरह से मैंने यहाँ के माहौल में कल से और आज में देखा कि लोग घबराए हुए नहीं हैं और एक मोटिवेटेड दिख रहे हैं। एक तरह का मोटिवेशन है सभी लोगों में कि जो ये काम किया जा रहा है ये उनकी ड्यूटी नहीं है, मतलब खाना पूर्ति नहीं करनी है, तो उसका योगदान जिसको कहते हैं कि ऊपर से शुरुआत होती है। तो जो भी आप लोग कर रहे हैं या जिस तरह का व्यवहार है वो बहुत बढ़िया, और आगे ऐसा होता रहना चाहिए, और वही प्रदर्शित हो रहा है, वही इंगित हो रहा है, वही दिखता है बाकी पूरे प्रोसेस के ऊपर भी। जो हम लोग खुशियां मना रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं कल से कि मध्य प्रदेश में शूटिंग करना इतना आसान होता है, क्यों होता है, उसके पीछे शायद क्योंकि जैसा शिवांकित ने बताया कि मैं बैंडेड क्वीन से शुरुआत की थी और उसके बाद एक फिल्म की शूटिंग की, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, सुधीर मिश्रा साहब की, यहाँ पे ही शूट हुई थी। तो उसके अंदर मेरे जो बहुत वेग से अनुभव हैं, स्वानंद किरकिरे साहब की ज़िंदगी पलटी, बावरा मन गीत उसमें गाया गया, और स्वानंद यहीं पर झंडे गाड़े और आज तक जो झंडे बुलंद किए हुए हैं स्वानंद ने उस फिल्म से, तो उसका अनुभव मेरा ये रहा कि बड़ा नहीं था, बड़ा जिसका बोलते टीथिंग प्रॉब्लम थी, शुरुआत के दिनों में नहीं पता होता था, और वो जो एक हाथ को नहीं पता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। तो स्पाई वर्स में तो ठीक है वो, लेकिन आपको जब कोऑर्डिनेशन करना है तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं
दी, दूसरे ने नहीं दी, दूसरे को पता ही नहीं है। तो ऐसा कई शहरों में, कई जगहों पर होता है, जो कि जिसकी वजह से सारी शूटिंग्स जो थी मुंबई में सिमट कर रह जाती थी। क्योंकि आपको एक सेट पे जाना है, वहाँ पर आप दिल्ली बनाओ, कानपुर बनाओ, कलकत्ता बनाओ, इंदौर बनाओ, उज्जैन बनाओ, भोपाल बनाओ, स्पेन बना दो। हमारे यहाँ तो स्पेन बना हुआ है, वहाँ पर पुर्तगाल बना हुआ है, इटली बना हुआ है मुंबई के सेट्स पर। तो वो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि परमिशन नहीं मिलेगी। तो मुंबई में ये सवाल से थोड़ा सा अलग जाके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये अभिनेता होने के साथ साथ, क्योंकि जो प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर है, उनके चेहरे की जो पसीने होते हैं ना, जो ये फ्राउन होता है, उससे मालूम चलता है कि प्रोडक्शन कितने तकलीफ में है। तो यहाँ पे जब भी शूटिंग हुई है पिछले कुछ बरसों में, चाहे वो थाई मसाज की हुई हो इंदौर और उज्जैन में, और कोविड की इमीडिएटली बाद हुई थी, वो बड़ा सरल था। ना सिर्फ अधिकारी और प्रशासन, जो आम जनमानस है, जो होटल हैं, जो छोटे बड़े होटल जितने हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो तमाम लोग जिस तरह से जुड़े हुए हैं चीज़ों से, तो वो मुझे लगता है कि एक अच्छी आप लोगों ने एक जिसको बोले कि माहौल ऐसा बना दिया है, पिच ऐसी तैयार कर दी है जिसके लिए चीज़ें आसान हो गई हैं। अब मैं वापस सवाल पर आता हूँ जो शिवांकित ने कहा कि अब उसमें यही है कि मान लीजिए कि 1450s का हमें कुछ दिखाना है, 1450s का स्पेनिश आर्माडा का हमें दिखा रहे हैं हम लोग, लंदन पे अटैक हो रहा है, तो वो तो हम लोग वहाँ तो नहीं जा सकते हैं हम लोग, वो तो उसके लिए सेट ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो बड़ा सब्जेक्टिव है, ये बहुत सब्जेक्टिव है कि आपको जिस जगह पे जाना है और जिस शहर की कहानी है वहीं पर बोलेंगे तो अच्छा होगा। मुझे लगता है कि एक उससे ज़्यादा सबसे बढ़कर ये होता है कि आप जब गांव की कहानी गांव में बोलते हैं, छोटे शहर की कहानी छोटे शहर में बोल पाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो बड़ा मदद करता है किसी भी अभिनेता को, एक्टर को। प्रोडक्शन डिज़ाइन के तौर पे तो संजय लीला भंसाली साहब ने जितनी पीरियोडिक फिल्म बनाई है वो मुंबई के सेट्स पर बनाई हैं और बड़ी अच्छी बनी है, वो अच्छी बनती हैं। या आप लोगों ने जो अभी बनाई पार्टीशन पे पूरी सीरीज बनाई, अगेन वो उन शहरों में तो शूट नहीं हो पाई जहाँ की वो कहानी थी, लेकिन कितनी खूबसूरती से उसको अनफोल्ड किया गया उस कहानी को कि वो जहाँ है। तो वो मुझे लगता है कि एक्टर तो पपेट होता है ना, कठपुतली होता है, उसको जहाँ पे जिस तरह के माहौल दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए इतना सरल हो जाता है कि अगर कि छोटे शहर की या गाँव की कहानी और उसको नकली घर नहीं दिख रहे हैं, मतलब सामने फ्रंट फसाड बना हुआ है घरों का, और उसके वो एक चीज़ है, तो आप अपने आप को मन को मना लेते हैं। लेकिन अगर जैसे मैंने दुपहिया ओरछा में शूट किया, कहानी बिहार की है लेकिन गांव में शूट किया, लेकिन घर पूरे थे, गलियां पूरी थी, जो जानवर हैं, गाय बैल भैंस सारे के सारे, तो वो आपको, वो एक्टर को वो मदद जरूर मिल जाती है। जी जी बिल्कुल सही बात। मेरा थोड़ा सा मैं ये जोड़ दूं कि ये मध्य प्रदेश की ये भी बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ के लोकेशंस में आप यूपी भी दिखा लेते हो, यहाँ पे बिहार भी दिखा लेते हो, तो हमारा दिल वास्तव में बहुत बड़ा है, हमें इस कोई गुरेज नहीं। क्यों दिल से सारी जो धमनियां हैं पूरे शरीर को जा रही हैं, तो बिल्कुल सही बात है आपकी। नहीं, आपने कहा गजराज जी यहाँ लोग डरे सहमे लोग नहीं हैं क्योंकि एमपी गजब है, एमपी गजब है। जी जी नहीं, उसका कारण ये भी है कि यहाँ पे ऊपर से नहीं आता है, यहाँ से दिल से आती है। जी सर। तो गजराज जी, मध्य प्रदेश में भोपाल कह लें, इंदौर कह लें और जबलपुर कह लें, जो साहित्यिक शहर हैं हमारे, जहाँ पे साहित्य बहुत प्रोमिनेंट रहा है, वहाँ थिएटर भी रहा है क्योंकि साहित्य प्रोमिनेंट रहा है। तो एनएसडी के बाद या दिल्ली के बाद हम देखते हैं भोपाल में एक हिंदी थिएटर का बहुत बड़ा एक मंच है, और अच्छी बात यह है एमपी से होने की अभिनेताओं की कि हिंदी बड़ी साफ होती है लोगों की, क्योंकि उस तरह करप्शन नहीं है भाषा में। तो यहाँ के जो लोकल एक्टर्स हैं सर, उनको आप क्या लगता है किस तरह से वो यहाँ बैठे बैठे मुंबई तक पहुँच पाएँ, और जब हम यहाँ शूट करने आएँ तो उनके लिए एक अच्छा सिस्टम बना हो, तो वो जो यंग अभिनेता हैं जो भोपाल में थिएटर कर रहे हैं, इंदौर में थिएटर कर रहे हैं, उनको हम किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं ताकि जब यहाँ शूट हो तो हम लोग उनको ले सकें या उनकी ऑथेंटिसिटी यूज़ कर सकें। 20 साल पहले, 15 साल पहले जब हम लोग मुंबई से शूट करने आते थे, तो जो इतना टैलेंट होता नहीं था। तो आप जो बहुत कोई एक सिपाही एक, पीछे कहीं खड़ा हुआ दुकानदार एक, पड़ोसी एक,
ऐसा कोई जिसके हाथ पांव ऐसे हिल रहे हैं, उनकी कास्टिंग हो जाती थी और बाकी सारा का सारा क्रू जो है, एक्टर्स जो हैं वो मुंबई से आते थे। तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे थे तो सही, रंगमंच है तो एक्टर तो होंगे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं था, वो चैनल नहीं था कि अप्रोच कैसे करे, मिले कैसे। तो वो अभी पिछले कुछ बरसों में चेंज ये आया है, बदलाव ये आया है कि कास्टिंग डायरेक्टर जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नहीं था 10 साल 15 साल 20 साल पहले, वो कास्टिंग डायरेक्टर एक जो प्रोफेशन है उसको रिस्पेक्ट मिली है, जिसकी वजह से वो अलग अलग शहरों में जाके कलाकार ढूंढते हैं और जहाँ पर शूटिंग हो रही होती है वहाँ के कलाकारों को मौका मिलता है। तो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है अपने 2-3 प्रोजेक्ट्स में जो पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में हुए हैं, इतने कमाल के कलाकार हैं। और ऐसा नहीं है, आमतौर पर पहले होता था कि चलो इसको दे दो, ये लाइन बोल देगा, बिना डरे बोल पाएगा ये लाइन। अब ये होता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है, इसको बड़ा वाला पार्ट देना चाहिए, बॉम्बे से बुलाने की जरूरत नहीं है। वो मुझे लगता है कि ना सिर्फ प्रोड्यूसर के लिए एक बहुत अच्छी चीज हुई है, क्योंकि सिर्फ एक्टर की फीस नहीं होती है, एक्टर की का आना जाना होता है, एक्टर का रहना होता है, और कई बार एक्टर के नखरे भी होते हैं बहुत सारे, तो वो प्रोड्यूसर जो उनको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो क्या होता है, लोकल भोपाल में जैसे हमने थाई मसाज में भोपाल से बहुत सारे एक्टर्स आए, तो वो बड़ा आसान हो गया, प्रोडक्शन के लिए भी बड़ा आसान हो गया। और ऐसा ये वैसा नहीं कि आप ओब्लाइज कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं लोकल टैलेंट पे। लोकल टैलेंट और मुंबई के क्रू के बीच में एक गजब का कोलैबोरेशन हो रहा है और उसको सम्मान मिल रहा है। मैं तो चाहूंगा शुक्ला जी, आप जिस तरह से आगे प्रगति कर रहे हैं कि ये जो एक बेंचमार्क है, एक क्या कहेंगे जिसको, एक और सीढ़ी है कि कलाकारों को तो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ के, एक सीढ़ी और आगे बढ़ना चाहिए और डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। क्यों ना यहाँ पर लोकल फिल्म मेकर जो हैं उनको उनका हाथ पकड़ा जाए, और क्यों मुंबई पर आश्रित रहा जाए, क्यों कलकत्ता पे, क्यों चेन्नई पे, क्यों हैदराबाद पे आश्रित रहा जाए कि वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ के टैलेंट को कितना मौका मिलना चाहिए। यहाँ का जो फिल्म मेकर है, यहाँ का जो कहानीकार है, यहाँ का जो राइटर है, यहाँ का जो डायरेक्टर है, वो यहाँ रहकर यहाँ की कहानी बनाए। कि भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लोग यहाँ से जा रहे हैं, स्वानंद किरकिरे यहीं से गए हैं, ये वो मुंबई में है, वहाँ पे गीत बनाते हैं, संगीत बनाते हैं, अभिनय करते हैं, लिखते हैं। वो ऐसा क्यों ना कर दें आज से 5 साल बाद कि स्वानंद बोले कि अरे मैं मुंबई में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं इंदौर में ही रहूंगा, मैं अपन तो इंदौर में रहेंगे, वहीं पे कर रहे हैं अपन काम। ऐसा अगर हो जाए तो बड़े आनंद की बात होगी। बहुत आपका ये सजेशन बहुत स्वागत योग्य है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज सुबह से सेरेंडिपिटी बहुत बार आया है शब्द हमारे इसके पहले वाले पैनल डिस्कशन में। एक यहाँ पे रिजॉर्ट है, उसका नाम ही सेरेंडिपिटी है। तो आज भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो सेरेंडिपिटी के कारण हो रही हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं ये देखिए होना भी शुरू हो गया है। अब होम बाउंड किसने बनाई? होम बाउंड घेवान जी मध्य प्रदेश के ही हैं। विमुक्ति अभी जो इन सर्च ऑफ स्काई टोरंटो में हुआ है ना, टोरंटो में अवार्ड मिला है ना, और उसके पहले शायद कांस में भी हुआ था। तो ये ग्वालियर के हैं परिहार जी। तो लोकल टैलेंट, लोकल ब्रज में बनी है, हाँ ग्वालियर के हैं। तो क्या है कि यहाँ की मिट्टी में ऐसी बात है कि दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे स्टोरीज भी हैं, फोकलोर्स भी हैं। इट्स अ लैंड ऑफ स्टोरीज एक्चुअली, ट्रूली स्पीकिंग, क्योंकि ये इतना ऐतिहासिक जगह है मध्य प्रदेश, इतिहास इतना समेटे हुए है। और इतिहास क्या है? इतिहास केवल स्टोरीज ही तो हैं जो अब रह गई हैं, या मॉन्यूमेंट्स हैं, या मॉन्यूमेंट्स भी अपनी स्टोरी कहते हैं। तो स्टोरीज हैं यहाँ पर हर जगह पे, और स्टोरी कहने वाले भी हैं। और रंगमंच जो है यहाँ के लोगों के खून में है, ये तो शिवांकर ही बताएंगे। यहाँ पे हर ज़िले में, मैं तो 5-6 जिलों में पोस्टेड रहा हूँ एज कलेक्टर, वहाँ पे रंगकर्मी जो हैं इतने पैशनेट हैं। वो कहते हैं हमें कुछ चाहिए नहीं, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। वो सड़क के किनारे एक जगह कहीं सरकारी कोना खाली पड़ा हुआ है ज़मीन का, उसमें उठा करके अपना नाटक खेलना शुरू कर देते हैं। बोलते बस मेरे को हटाओ नहीं, ऐसे मेरा कोई सामान पड़ा है फेंको नहीं, हम खरीद नहीं सकते ज़मीन, बट हमें नाटक करने दो, इतना चाहते हैं वो। तो ये इनके ब्लड में है, कुछ तो है यहाँ की मिट्टी में खास बात। तो ये होना शुरू हो गया है। अब आपका सजेशन है इसको फॉर्मल स्ट्रक्चर में भी डालेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। जी, जैसे अपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ किया, उस तरह का कुछ आपका
अग्रीमेंट FTI से हो जाए, इस तरह की किसी संस्था से हो, और क्यों आश्रित क्यों रहें किसी दूसरे शहर पे? कोई भी शहर दूसरे शहर पे क्यों आश्रित रहे? और एक सबमिशन मेरा और है, मैं कहना चाहता था कि ये जितनी मेरी समझ है और नॉलेज है, प्रकाश झा साहब ने यहाँ पर लगातार लंबे शूट्स करने की परंपरा शुरू की, तो हमें उनके योगदान को भूलना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। जी जी जी। बस एक छोटा सा एक सवाल और है कि आप एड फिल्म मेकर भी हैं, आपने इंक्रेडिबल एड्स देखे होंगे मध्य प्रदेश के जो बहुत फेमस हैं दुनिया भर में, तो अगर आपको मौका मिले एक एड शूट करने का इस राज्य में, तो आप क्या लोकेशन होगी? मैं बिल्कुल तत्पर हूँ, साइन करवा लीजिए आप मुझसे। सर अगला इंक्रेडिबल एड का कॉन्ट्रैक्ट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा अगला सवाल है सुनीता मैम से। सुनीता मैम, तो लोग कहते हैं कि आप यहीं की हो गई हैं अब। आप पिछले 3-4 सालों से लगातार भोपाल आ रही हैं हर साल, फॉर गुल्लक, फॉर पंचायत। तो मेरा ये मानना है कि मुझे ये जानना है कि जब आप गुल्लक और पंचायत के लिए आप, जैसे आप अभी कह रहे थे कि आपको मुंबई से यहाँ आना पसंद है, जब यहाँ शूट होता है आप एक्साइटेड रहती हैं कि अरे भोपाल जाना है शूट करने। जी। तो क्या है ऐसा, आपको क्या ऐसी इच्छा होती है, आप यहाँ के शूट करना चाहती हैं, यहाँ के कल्चर में, यहाँ के खाने में, या यहाँ के शूटिंग कल्चर में, एनवायरनमेंट में, क्या आपको ऐसा लगता है जो अलग बनाता है बाकी शहरों से? जैसे शुक्ला जी और गजराज सर ने बोला था, यहाँ की मिट्टी में कुछ बात है, यहाँ की आबो हवा, और उसी से बना है यहाँ का समाज, यहाँ के लोग। यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि मैं काम पर जाने के लिए आई हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मायके आ जाती है ना लड़की शादी के बाद, वो वाली फीलिंग आती है, घर लगता है। जबकि ये मेरा घर नहीं है, मैं उत्तराखंड की हूँ। उसके बाद जो मेरे बाकी वर्ष जीवन के बीते हैं वो बॉम्बे में बीते हैं, बट स्टिल मुझे बहुत ही ज़्यादा सहज लगता है जब मैं भोपाल में शूट करती हूँ। हम लोग महोड़िया गांव में पंचायत शूट करते हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पर किसी को कोई मतलब नहीं रहता है, इतना शूटिंग फ्रेंडली कोई भी मैंने आज तक शहर नहीं देखा या लोकेशन नहीं देखी है। प्रोड्यूसर के तौर पर गजराज सर बार बार बोलते रहे हैं अपनी बात में कि ये सबके लिए, ये मध्य प्रदेश जो है ये एक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, राइटर के लिए, क्योंकि लेखक जब लिखता है वो जो कहानी को सोचता है, उसकी लोकेशन, जैसे गजराज सर भी बोल रहे थे, दरवाज़ा खुलने के बाद घर के अंदर जब आप उस मिट्टी में रहते हैं ना जहाँ की कहानी बोल रहे हैं, तो वो एक्टर के लिए बहुत ही योगदान रहता है, बहुत बड़ी हेल्प रहती है कि आप वो महसूस कर सकें उस कहानी को, अपने किरदार को, अपनी वेशभूषा को, खान पान को। आप अलग ही नहीं हो पाते हैं। तो ये जो खूबसूरती है ये मध्य प्रदेश में ही मैंने देखी है। मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा काम किया है। मैंने उज्जैन में शूट किया है, स्त्री हमने चंदेरी में शूट करी है, फिर गुल्लक किया है, पंचायत किया है, और मेरे तो जीवन का जो स्वर्णिम समय रहा है वो मध्य प्रदेश से ही शुरू हुआ है। तो मैं तो वैसे ही बहुत ऋणी हूँ मध्य प्रदेश की, और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं हिस्सा हूँ उन सभी शूटिंग्स का जो यहाँ पर हुई हैं, और मैं चाहूँगी आगे भी मेरा लगातार काम यहाँ पर होता रहे, बिकॉज़ इससे बेहतर जगह और कोई है नहीं। आप जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, घूमने के लिए इतनी खूबसूरत जगह है, आप इंदौर चले जाइए, आप भोपाल के मार्केट में जाइए, यहाँ की रबड़ी खाइए, कुल्हड़ की चाय पीजिए, और जो साफ़ सफाई है यहाँ पर, बस मेरा एक शराफा छूटा है, मुझे वो भी जाना है। और मेरा जो एक बहुत ही अप्रीतम मित्र है स्वानंद, वो भी इंदौर मध्य प्रदेश से है। तो मैं तो बहुत बहुत ऋणी हूँ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ने आपको प्रधान भी बना दिया, देखिए। बिल्कुल, प्रधान भी बना दिया। और पूर्व प्रधान साहब पहले वाले सेशन में थे, आप दोनों साथ साथ नहीं आते हैं क्या? इस बार सांसद जी के साथ है। इस बार सांसद जी के साथ, जी हाँ। तो मैम दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने थिएटर किया, आपने OTT में भी काम किया, आपने फिल्मों में भी काम किया, आपने टीवी भी किया है, तो आपका भोपाल के थिएटर को लेके जो रीजनल थिएटर है, मैं उसे शायद हिंदी ना कहूँ, मैं उसे कई भाषाएं यहाँ पे, बुंदेलखंडी है, बघेलखंडी है, ब्रिज है, तो जो रीजनल थिएटर है भोपाल का, उसको हम
हमारे नए जो अभिनेता हैं, एक्टर्स हैं, थिएटर एक्टर्स हैं, उनके लिए हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं ताकि एक रीजनल एनवायरनमेंट अच्छा बने इस शहर में नाटक का? देखिए, आप मेरे ख्याल से इसलिए ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है आप कुछ कमतर पड़ते हैं, लेकिन अगर आप सभी प्रदेशों के हिसाब से देखें तो यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, जो थिएटर वाले हैं, वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर बाहर से इतनी ज़्यादा शूटिंग्स हो रही हैं, और जैसे गजराज सर ने भी बोला था, मैं उसी बात को बोलूँगी, जो लोकल आर्टिस्ट हैं, क्योंकि वो यहाँ का थिएटर इतना रिच है ना कि वो सब में वो कॉन्फिडेंस है, वो कमतर नहीं पड़ते हैं बॉम्बे के आर्टिस्ट या किसी भी ट्रेंड आर्टिस्ट से, तो वो बराबर ही चल रहे हैं और मेरे ख्याल से वो आगे ही जाएंगे। उनको बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचना या फिर भयभीत होना उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है, उनके लिए तो रास्ता खुला हुआ है, वो साथ चलने के लिए ऑलरेडी सब प्रिपेयर्ड है। और मैंने अपना जो एक नाटक था जो मैं नीना गुप्ता जी के साथ करती थी, जो मेरे प्रतिद्वंदी रही है पंचायत में, सूर्य की अंतिम सूर्य की पहली किरण तक, वो भी हमने भोपाल जो है रंगमंडल के साथ किया था। तो ये तो बहुत रिच है यहाँ का थिएटर, यहाँ के आर्टिस्ट, वो सब सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ के लोकल्स हैं। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक मैंने जितने भी यहाँ पे भोपाल के, मैंने खुद भी जो काम किया है, जो भी हमने शोज़ किए भोपाल के अभिनेताओं के लिए, यही सब कहना चाहता हूँ कि बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, बहुत बेहतरीन है। और हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हम शोज़ करें या करें तो उन्हें एक प्रॉपर, जैसे गजराज जी ने कहा कि वो जो पीछे हाथ हिलाने वाला कल्चर है वो चला जा गया है, वो मेन स्ट्रीम में मेन रोल आके कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि कलाकार इतने अच्छे हैं ना, देखिए हाथ हिलाने का काम तब मिलता है जब आप अपना काम नहीं कर पाते हैं, तब होता है चलो भाई ये कर लो, लेकिन यहाँ के कलाकार उससे बहुत आगे हैं। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मिस लारा। सो या माइक। So, with the recent MOU between MP and Spain already in place, what do you see as the next futuristic steps to ensure this collaboration translate into tangible opportunities for filmmakers and co-productions and also talent exchange also? Namaste. Namaste. And I'm sorry because I have to speak in English. I can't speak Hindi. I'm sorry for the audience. And first of all, I want to join Anna because we are very grateful with the Ministry of Madhya Pradesh to invite us. So yes, we have an agreement recently. The president of Spain Film Commission, Juan Manuel Guimerán, signed this MOU. And we are very happy to collaborate with Madhya Pradesh because we share the vision between the audiovisual industry and the tourist industry. No, like CEO told before, we share too the tax incentives. We have 30% too, and I think for the next steps for collaborate between Madhya Pradesh is collaborate in the marketing strategy, no? Because I think the most important of join the both industries is involve the stakeholders. Here there are a lot of stakeholders for tourism, and I want to say our vision in the film production is the best important because it's the storytelling about our culture, our heritage, our landscapes. No? And for that, with Madhya Pradesh, I think we are in the same line. And the next steps, we are talking about promote in different festival markets in audiovisual and tourism. For example, the next January, we have feature screen and is, for example, a market to promote your culture, your visitors, no? And that where you can show your values, your culture, no? And I think it's the first
step for that. Yeah, thank you so much. So, my next Shankit, question. I will just, as a piece of information, because people from all diverse backgrounds are here. Next 2 years, Government of India and Government of Spain have declared to be in India-Spain years of cooperation, mutual cooperation. Yes. So there'll be a lot of cultural exchange, a lot of, activities going on. There are people coming to India, going to various states and, collaborating in different fields. Our people going to Spain. So there's a right time, opportunity to, make good use of this particular occasion. And that is why we have pitched Madhya Pradesh as front-runner state for Spanish artists, etc., to come and explore possibilities of I collaboration. hope so. And thank you for saying, because it's true, the next year is, in 2026, is the dual year for the both countries. And I hope we have a lot of meetings like this. Thank you. Lovely. My next question is, based on Spain's experience in international collaborations, what strategies or best practices could MP also adopt to strengthen its global positioning as a film-friendly and culturally vibrant destination? Yes. Now recently, we finished a project that we work with the Ministry of Tourism in Spain. So I don't say before, but Spain Film Commission is where I behalf for here. It's an association to promote shooting in Spain, no? But we have to work all the time with all the institutions, with the Ministry of Culture, with the Ministry of Tourism, with a lot of organization to say before, to involve all the ecosystem, no? And we recently finished a project, it's called Experience, with the Ministry of Tourism, and we make a methodology in 4 regions in Spain. It's 4 projects, but it's interesting, and if you can search in our website, it's called Experience Program, and you can implant the methodology to the experience of tourists for setjetters, no? For the visitor of setjetter, visitors interested in the films and television series. And recently, this methodology, I think you can implant in another regions, another countries. But in Spain Film Commission, we work around the tourists for a long time ago. With the first was Fitur, is our 8th edition. It's in January in Madrid, and we want to join the industry of audiovisual with the industry tourism. And because we think it's like a circle, no? When the producer here, you are shooting, finally the people wants to know where you are shooting, where is this heritage, these locations, no? And finally, it's an ecosystem that have a great impact, economic, culture, and this. Lovely, thank you. You're welcome. Let's hope as an actor someday I'll be in Spain shooting something. Let's see. Thank you so much. My next question is to Vishal sir. Vishal sir, MP में आप आए हैं, आपने काफ़ी फिल्में यहाँ शूट की हैं, आप काफ़ी सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं, शूट कर रहे हैं, बट मेजरली ऐसा हुआ है कि आप हम देखते हैं ज़्यादातर कि भोपाल, जबलपुर या इंदौर के आसपास ही बड़े शहर ही हैं, 3-4 जहाँ पे मोस्टली शूट्स हो रहे हैं. आपको क्या अपॉर्चुनिटी दिखती है कुछ ऐसे अनटैप्ड लोकेशंस जहाँ पे आज तक किसी ने शूट नहीं किया है और वहाँ लोग गए नहीं हैं, बल्कि वो जगह इतनी सुंदर है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं सतना के आसपास से आता हूँ, खजुराहो वहाँ पास में, वहाँ एक पांडव केव्स हैं, या पन्ना के जो जंगल हैं वो बहुत ही देखने में बिल्कुल अलग हैं. आप हिंदुस्तान में कहीं ऐसा टेरेन आपको मिलेगा नहीं. तो ये जो अनटैप्ड लोकेशन है, आप क्या चाहते हैं कि आप कल को फ्यूचर में आप बिल्कुल एक्सप्लोर इन्हें करना चाहेंगे? ऐसी कोई लोकेशंस हैं जिन पे आप शूट करना चाहते हैं जाके? Hello everyone.
बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस पैनल पे मुझे बुलाया गया। आई थिंक सबसे जूनियर शायद यहाँ पे मैं हूँ और इन सब लोगों के साथ बैठ के मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और आई थिंक शायद मेरे तकदीर में लिखा था कि मैं एमपी में शूट करूँ, आज यहाँ आके बैठूँ, तो वो भी एक अच्छी फीलिंग है। तो मेरा एमपी का एक्सपीरियंस 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले मैंने 2016-17 में यहाँ पे सावधान इंडिया के कुछ एपिसोड शूट करने आया था। तो तब बात ये चल रही थी कि हमें भोपाल में गलियों में शूट करना है, मेन रोड्स पे शूट करना है, मार्केट में शूट करना है और ऐसी पब्लिक प्लेसेस में शूट करना है। और ख़ास करके हमारा फिल्म मेकर्स का एक्सपीरियंस ये होता है कि कहीं पे भी कैमरा रख दो इंडिया में भीड़ जमा हो जाती है और आपका शूटिंग तो मतलब नहीं हो पाता है, उनको हटाने में ही सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। तो हम जब भोपाल में शूट कर रहे थे तो मार्केट में कैमरा लगा हुआ है, लोग आ जा रहे हैं और प्यार से शूटिंग हो रही है, कोई रुक नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो पहले दिन तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है, दूसरे दिन भी अच्छा गया, शूट बहुत स्मूथली शूट हुआ, मैं चलो ठीक है। तीसरे दिन भी कोई नहीं पूछ रहा, तब थोड़ा सा इंसल्टिंग लगने लगा कि अब ये तो यार इंसल्ट हो रहा है यार, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए यार, मतलब क्या हम मतलब इतना बेकार काम कर रहे हैं कि कोई पूछ नहीं रहा। तो तब ज़हीद ने मुझे बताया कि नहीं भाई पूछ सब रहे, लेकिन उनका एटिकेट ऐसा है कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो जा रहे अपना काम कर रहे। मैं बोला यार ये बहुत सही है। तो दैट आई टुक फॉरवर्ड बैक होम एंड वेन एवर इन बॉम्बे एनीबडी आस्क्ड मी कि भाई कहाँ जा सकते हैं कोई दूसरी जगह, तो मैंने बोला यार मेरा भोपाल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, प्लीज़ आप भोपाल जाइए, बेशक शूट कीजिए, आपको सारी व्यवस्था सब मिल जाएंगी। ये सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस था एमपी का। सेकेंड, जब कोविड में हम चोरी का प्लानिंग कर रहे थे और फर्स्ट वेव कोविड ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था, लेकिन तब हमें पता नहीं था खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है, पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है, हमें पता नहीं था, पर शूटिंग तो करनी थी, काम तो करना था। तो बायो बबल में शूट करने का प्लान था। अब बायो बबल में 30% क्रू के साथ शूट करना है, तो बॉम्बे में शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोग घर जाएंगे अपने, फिर सेट पे आएंगे, वो पॉसिबल नहीं था, हेल्दी नहीं था। तो कहाँ जाए कि जहाँ आपको इतना टैलेंट मिल जाए, सारी व्यवस्था मिल जाए कि जहाँ आप 30% क्रू में काम कर पाए। तो तब फिर से एमपी की बात आई और फिर पिपरिया गांव में हमने सेट लगाया गन्नों खेत के बीच में और बहुत बेहतरीन स्मूथ शूटिंग हो पाई वहाँ पर। तो वो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था। अब तीसरी बार 1-2 महीने पहले भुवनेश प्रोड्यूसर जो है मेरे अगली सीरीज़ के, वो मेरे पास आए एक कहानी लेकर और बोले कि भाई ये एक कहानी है, बड़ी एम्बिशियस तरीके से लिखी कहानी है, जहाँ पे महल चाहिए, फोर्ट्स चाहिए, लेक्स चाहिए, रिवर्स चाहिए, गांव चाहिए, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ चाहिए उसके अंदर। और मैंने बोला यार ये तो हमें 10 जगह भागना पड़ेगा इंडिया में, एक लोकेशन की तो बात नहीं है। और प्रोडक्शन में हम सब हमें पता है कि जितना आप आउटडोर करो उतना आपका एक्सपेंस बढ़ता है। बोले ये तो इम्पॉसिबल है करना, आप जिस तरीके से बोल रहे हो 60-70 दिन में तो ख़त्म करना, ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा। वो मुझे सुन रहे थे, बड़े प्यार से सुन रहे थे, वो सागर के हैं एमपी के। तो उन्होंने मुझे एक ही शब्द बोला, ओरछा। मैंने बोला ओह, क्या मुझे पता नहीं था ओरछा के बारे में, तब तक मेरी एग्जीक्यूशन हुई नहीं थी ओरछा में। और अभी 2-3 महीने पहले मैं ओरछा आया, उसके बाद मैं 30-40 दिन यहाँ आया हूँ, 2-3 बार आया हूँ। और इतना बेहतरीन लोकेशन है, जो आप बोल रहे थे फिल्म सिटी, जो हज़ारों साल पुरानी फिल्म सिटी हो सकती है, तो मुझे ये सारे लोकेशन एक ही जगह मिल गए हैं। और अब मैं ये वीक ओरछा शूट शुरू करूँगा, हम भुवनेश्वर हम शूट शुरू करेंगे, ऑलमोस्ट 60-70 दिन हम ओरछा में शूट कर रहे हैं और इतनी प्यारी जगह है। तो मेरा एक्सपीरियंस मतलब हर बाहर ही मैं अनटैप्ड टेरिटरी में ही गया हूँ। मेरे लिए तो अनटैप्ड ही है क्योंकि मैं तो पूरी ज़िंदगी बम्बई में बिताई है, तो मेरे लिए तो अनटैप्ड ही है। और अब ओरछा के रेकी के दौरान भी जब भी मैं छोटे छोटे गाँव में आसपास जाता हूँ तो मुझे हर बार एक नया फ्लेवर पता चलता है। तो अभी आपने पांडव के उसके बारे में बात करी, अब शायद अगली बार वो देखा जाए। एक नई बात मेरे जहन में आई है कि यहाँ कहीं पे भूतों का मेला लगता है। तो अब क्योंकि मैं हॉरर फिल्म बनाता हूँ तो अब मेरा इंटरेस्ट है कि मैं जाके उसको भी विजिट करूँ। तो हर बार ही एमपी एक नया सरप्राइज देता है, तो मेरे लिए तो बड़ा मज़ेदार है यहाँ शूट करना। स्त्री ने तो चंदेरी को पहले ही भुतहा बना दिया। सर जैसा आपने कहा कि मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि हॉरर फिल्मों के उस पे आपने कई चीज़ें सोशली भी कही हैं। जो आपकी हॉरर फिल्में हैं वो बड़ी विमेन सेंट्रिक हैं, जहाँ पे किरदार जो है एक विमेन सेंट्रिक है। तो मेरा ये जानना कि सोशल एक रेलेवेंस है आपकी फिल्मों में, सिर्फ वो हॉरर नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोग जब सिनेमा देखना शुरू करते हैं तो हमने सुना सुरमा भोपाली लेट्स सपोज, या हमने कुछ ऐसी फिल्में देखी जहाँ ऐसा दिख रहा था कि ये फिल्म तो एमपी की है, तो एमपी में ही इसका कल्चर एमपी में ही दिख रहा है, इसको आप कहीं और शूट कर नहीं सकते क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगा।
एक फिल्म थी मुहाफिज जिसमें शशि कपूर की, जिसमें भोपाल के नवाबों की बात की गई है, शायरों की बात की गई है, तो वो आप यहीं आके पुराने भोपाल में शूट करेंगे। तो आपको ये लगता है कि कल्चरली हमें इस तरह के स्टेप लेने चाहिए कि हम ऐसी फिल्में लिखें, ऐसे काम करें मुंबई में कि यार भाई ये फिल्म तो भोपाल जाके, इंदौर जाके ही शूट करनी पड़ेगी, क्योंकि कल्चरली इतना स्ट्रांग है वो स्क्रिप्ट में कि आपको यहीं आके शूट करना पड़ेगा। तो ऐसी फिल्में और बननी चाहिए, आपको लगता है? मेरी परवरिश मुंबई में ही हुई है। मैं बाय लैंग्वेज मैं गुजराती हूँ, लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा जेनरिक मानता हूँ, थोड़ा सा नोमैडिक मानता हूँ। मैं कोई एक जगह के बिलोंग नहीं करता ऐसा मुझे लगता है। तो मेरी कहानियाँ भी ऐसी होती है जो कोई एक जगह को बिलोंग नहीं करती है। तो और मेरे लाइफ में माय मदर वाज द डोमिनेटिंग फिगर घर पर, तो इसलिए माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया। तो मेरे लिए वुमेन फिगर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है मेरे दिल में, मेरे जहन में, और मेरी कहानियों में वो रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि जब भी मैं कहानी को लिखता हूँ तो हमेशा जब जब कहानी लिख के एक कैरेक्टर उभरा है और उसमें जैसे ही एक फीमेल कैरेक्टर को डाल दिया, वो कहानी की रंग अलग हो जाते हैं। उसका इतना रेंज, उसका इतना वास्ट हो जाता है कि मुझे बड़ा मज़ा आता है फिर उस कहानी के साथ खेलने के लिए, उसको लिखने के लिए। और वो जो एक गहराई है उस फीमेल कैरेक्टर की, उसको एक्सप्लोर करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोशल झुकाव की तरफ मेरी फिल्में होती है, हमेशा झुक जाती है उस तरफ। और वो मेरे टाइटल्स भी ऐसे ही रहे, छोरी 1, 2, माँ, सारे फीमेल कैरेक्टर्स को टाइटलर रोल मिला है। तो अब उसमें रेलेवेंस एमपी का कहाँ आता है कि जब, क्योंकि मैंने कहा कि मैं एक ऐसी स्टोरी बताता हूँ जो कोई पर्टिकुलर प्लेस को बिलोंग नहीं करती है, बट जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम कोई भी रीजन में जाए ना, तो हम शायद उस कहानी को वहीं प्लेस कर देते हैं। हम राजस्थान में शूट करें तो ऐसा लगता है कहानी राजस्थान की है, मैं महाराष्ट्र में शूट करूँ तो लगता है कहानी महाराष्ट्र की है। वैसे अलग हर देश के अपना अपना एक बहुत स्ट्रांग फ्लेवर है, बट आप एमपी का फ्लेवर देखो तो ये सबका मिक्स है इसके अंदर। तो क्या होता है, जब मैं यहाँ कहानी प्लेस करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी पूरे इंडिया को रेजोनेट होती है, पूरे इंडिया ये कहानी को बिलीव करता है कि हाँ ये हमारे पास भी हो रहा है। तो मेरे लिए ना वो एक बाउंड्रीज थोड़ी सी मिट जाती है, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ का लैंग्वेज, यहाँ का खाना, सब कुछ एक मिक्सचर है चीज़ों का, जो मेरे लिए बड़ा हेल्प करता है। तो मेरी इसलिए मेरा थोड़ा सा झुकाव एमपी की तरफ हमेशा रहा है जब मैं सोशली रेलेवेंट कुछ एक चीज़ सोचता हूँ। और क्योंकि मैं बम्बई का हूँ तो मेरे लिए बड़ा हेल्प करता है, एक वो चीज़ है। अब इसमें एक जो आज पॉलिसी की बात की, आई थिंक 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बताए। एक तो वुमेन सेंट्रिक फिल्मों को जो इनिशिएटिव जो बढ़ रहा है, आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई डू सब्जेक्ट्स लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे फीमेल फिल्म मेकर्स को भी एक एनकरेजमेंट मिलेगी इस चीज़ से। और दूसरा, शॉर्ट फिल्म का जो पॉलिसी आपने बताई, आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट पॉलिसी, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बना पाते क्योंकि वो उनके पास फंड्स नहीं होते। तो ये आई थिंक 2 इनिशिएटिव एकदम ही पकड़ में आ गए हैं। सो आई थिंक इट्स ग्रेट कि आप ये सब कर रहे हैं सर, और बहुत सीमलेस सारा प्रोसेस रहा है। आप राम कुमार सर भी है, वो बार बार फ़ोन करते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है बड़ा एट होम फील होता है। और तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। स्वानंद सर, आपका एक गाना है, माफ़ कीजिएगा अगर मैं थोड़ा लिरिक्स इधर उधर कर दूं, कि नानी की कहानी का वो बाग कहीं कहानियों में न रह जाए आज। तो मैं ये, क्योंकि सर बाग की बात होती है तो एमपी की बात होती है, सबसे ज़्यादा बाग है यहाँ पे। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो लिखने की शैली है लिरिक्स की या गानों की, उसमें जब आप पले बड़े हुए एमपी में, इंदौर में, तो आपके गानों में, आपके लिखने की शैली में कितना एमपी है जो आपने इस राज्य से सीखा या देखा, जो एक्सपीरियंस किया, जो आपने, क्योंकि बाग जैसे आपने लिखा तो आप कनेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ से। मुझे आखिरी में बोलने का मौका दिया क्योंकि मैं आखिरी इनविटेशन था इस प्रोग्राम में आने का। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ। थैंक यू, सॉरी फॉर माई स्पेनिश फ्रेंड्स। इसको आखिरी नहीं बोलते, इसको शो स्टॉपर बोलते हैं। अरे क्या बात है, नहीं, मुझे इसलिए मैंने बोला क्योंकि अब सारे सवालों के जवाब हो चुके हैं। लगभग सभी ने वो बातें कह दी है जो मैं सोच रहा था ये मैं बोल दूंगा, धीरे धीरे करके सारी बोल दी गई है। तो अच्छा कि आपने ये पूछा। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं मेज़बान कह सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं एमपी का बच्चा हूँ, बच्चा तो नहीं हूँ लेकिन एमपी में पैदा हुआ हूँ, तो मैं अपने आप को मेज़बान कह सकता हूँ, इसलिए मैं ये बात कहता हूँ। और एमपी मुझ में कितना है, ये तो आप, मध्य प्रदेश मालवा का हूँ मैं, तो
शब्दों की परंपरा ही मालवा की पूरी मेरे अंदर बसी हुई है, मेरी रग रग में मालवा है। मैं जो भी लेके गया हूँ बाहर वो मालवा ही लेके गया हूँ। लेकिन उसके विपरीत में 2-3 चीज़ें ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि मैं जब भी आजकल बम्बई में और मुंबई में और सब जगह पे एक लगातार मध्य प्रदेश हवा में है, इट्स इन एयर। हर कोई बात कर रहा है कि यार वहां जाएंगे फिल्म बनाने के लिए, तो धीरे धीरे कान खड़े हुए कि हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में, ये क्या चक्कर चल रहा है, ये क्यों क्या हो रहा है। और धीरे धीरे पता चला कि अरे यार इतनी अच्छी पॉलिसीज है, इतनी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है फिल्में बनाने के लिए कि हर कोई आकृष्ट हो रहा है वहां जाने के लिए। मराठी फिल्में यहां बन रही है। मैं खुद अभी कुछ दिन पहले, महीना भी नहीं, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले एक हीरो नाम की मराठी फिल्म की शूटिंग यहां करके गया भोपाल में। मैं एक्ट करके गया उसमें। मुझे समझ में नहीं आता था कि मराठी फिल्में क्यों अट्रैक्ट हो रही है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की और आप सब लोगों की और ये जो पॉलिसीज है ये बहुत ही जिसे कहते हैं प्रैक्टिकलिटी के लेवल पे बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। इसके बाद भी अगर हम फिल्म मेकर्स बोलेंगे कि पिक्चरें नहीं चल रही तो फिर गड़बड़ होने वाली है। सो इनफैक्ट तो ये 2-3 चीजें हैं। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं मालवा का ही हूं, मालवा से ही हूं। और कुछ सॉरी, अरे मैं भी सोच रहा हूँ कि सर सारे सवाल पूछे आ चुके हैं। मैं तो फिर मैं जवाब दे दूं जो मुझे 2-3 चीजें बोलनी है। जी जी सर प्लीज। जो रंगमंच के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी, तो रंगमंच के बारे में, यहाँ के कलाकारों के बारे में बात हो रही थी। भोपाल रंगमंच के बड़े बड़े कलाकारों का शहर है ना। भोपाल में पीछे हाथ हिलाने वाले लोग नहीं, आलोक चटर्जी का शहर है, ये बाबा कारंत का शहर है, ये यहाँ पे जितेंद्र शास्त्री का शहर है ना। यहाँ पे वो कलाकार पैदा हुए हैं। और इसी गोपाल दुबे का शहर है जो यहीं पे है, यहीं पे कहीं, जैसे सर ने कहा कि कोने में थिएटर करते पाए जा रहे हैं, ऐसे कई सारे कलाकारों का शहर है ये। यहाँ टैलेंट वो नहीं है कि कोई तरस रहा है या तड़प रहा है मुंबई या फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। ऐसा बहुत सारा टैलेंट है जो यहाँ पे अपने आप में पैर उसके जमे हुए हैं। तो हाँ, ये हमारा सौभाग्य होता है कि हम बम्बई फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ आए और उनके साथ काम करें। उसके अलावा यहाँ पे मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा है जो बहुत लाजवाब काम कर रहा है। कल ही मुझे पता चला कि एक MOU साइन हुआ है भारत भवन की जो रेपर्टरी है उसको पुनर्जीवित करने का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ, मेरे मित्र शुक्ला जी और वो। ये ऐसे बड़े बड़े कदम हैं कि मुझे लगता है कि इससे मतलब हो सकता है अगली बार आपको बड़े एक्टर भी वहां से लाने की जरूरत ना पड़े, सारे ही यहां मिल जाए इस लेवल तक का। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इतना खूबसूरत है, सांस्कृतिक यहाँ पे जो यहाँ की धरोहर है वो इतनी गहरी पैठ की हुई है। और दूसरी बात एक और जो मुझे बोलनी थी कि मध्य प्रदेश को हम लोग बहुत सालों से, मैंने भी बहुत फिल्में, मैंने एक रतलाम में शो शूट किया अमेजॉन प्राइम का, कुछ 1.5 साल पहले ही शूट करके गया हूँ। उसके पहले हमने पैडमैन यहाँ पे शूट की, उसके पहले हमने हजारों ख्वाहिश ऐसी यहाँ पे शूट की, बहुत सारी फिल्में यहाँ पे शूट की। अभी जो माहौल बन रहा है ना वो काफी अलग है जो पहले के माहौल से। अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के लाइन प्रोड्यूसर्स यहाँ पैदा हुए हैं, जिस तरह की वो जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ बातें करते हैं, मतलब मुझे तो एक लाइन प्रोड्यूसर अभी मेरा दोस्त मिला था, वो कह रहा था कि हम तो स्क्रिप्ट रूम में बना रहे हैं, तो यहाँ कहानियां भी लिखी जाएंगी, आपको नहीं पता कल को। और जहां तक मध्य प्रदेश को एक फिल्म सेट की तरह यूज करने की बात है, वो तो बहुत कुछ है, लेकिन इसकी माटी में कहानियां भी बहुत है, इसकी माटी में अपनी कहानियां भी बहुत है, और यहाँ के लोगों को भी वो कहानियां कहने का मौका मिले। और मेरी तिवारी जी से भी बात हो रही थी, वो मुझे कह रहे थे कि यहाँ के मध्य प्रदेश के लोगों को एकत्रित करने का भी इनका कोई, आप लोगों का कोई प्लान है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है उसके बारे में मैं साधुवाद देना चाहूँगा। और मुझे बहुत 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 गर्व होता है, जैसे गजराज भाई ने पूरी बात कही अभी, कि यहाँ पे जो उत्साह मुझे सब लोगों में दिखाई देता है वो शायद मुझे किसी और स्टेट में या किसी और जगह पे नहीं दिखाई देता। हर कोई काम करने को तत्पर है, हर कोई अपने आप को दिखाने को तत्पर है, दिल से यहाँ पे काम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ हम सभी को, और खासकर शुक्ला जी, विदिशा जी और तिवारी जी और आप पूरी टीम को, कि आप लाजवाब काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मैं इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। अभी हम लोग एक डेटाबेस पे काम कर रहे हैं।
उस डेटाबेस पे हम लोग अलग अलग तरीके के, चाहे वो सिनेमाटोग्राफर्स हो, चाहे कोरियोग्राफर्स हो, जो भी हमारा टैलेंट पूल है पूरे मध्य प्रदेश का, उसको हम लोग रजिस्टर करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिससे कि जो बाहर से अगर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स आएँ तो हम उनको एक डेटाबेस दे सकें। उसके साथ ही हम स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ और हमारा जो स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी है उसके साथ भी हमने MOU किया है। वहाँ से जो द टैलेंट निकलेगा और जो हमारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हमारे यहाँ पे आके शूट करेंगे, उनके बीच में हम एक कड़ी बनेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनेंगे और वो हमारे टैलेंट को हायर करेंगे और इससे हमारे ये टैलेंट पूल जो है वो समृद्ध होता जाएगा। और आपको सभी को पता है कि हम लोग थिएटर में भी भोपाल तो थिएटरों का समृद्ध सिटी में से जाना जाता है। तो इस तरीके के दो ये जो काम हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये जो हमारे बच्चे हैं, यंग टैलेंट है, उन सबको एक काम करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। Lovely, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. So, sir, before we go, thank you so much, everybody. आप सबके insights के लिए. I hope ये सारे जो film producers हैं, actors हैं, उन सबको आप ये बात पहुँचेगी जब ये जाएगा. Sir, any closing line before we go? मेरे ख्याल से हमारे सबसे अंत में स्वानंद जी ने बिल्कुल अच्छे से सब चीज़ें कंक्लूड कर दी हैं और बिल्कुल हमारे लिए भी एक आगे का भी आप लोगों ने चलने का मार्ग प्रशस्त कर दिया कि हमें अब क्या और अचीव करना है। एक लेवल तक आ गए हैं बट हमें बैठना नहीं है, संतुष्ट नहीं होना है। दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे एंड विद some pointers given by my Spanish friends, we will take things forward and definitely as I understand there are at least 20 HODs working while shooting a film during the sets. So we have to create talent pool related to each of these verticals in Madhya Pradesh itself and also bring in the technology part of it, equipment part of it, everything available here so that the entire ecosystem becomes so smoothly available that nobody has to bother about anything. And one more thing which we keep on discussing, हमारे line producer से भी हमारी बातें होती रहती हैं, जैद बैठे हुए हैं सामने, तो हम लोग भी बैठते हैं तो हम यही बात करते हैं, अब क्या बेटा आगे चलो, अभी तो हो गया इतना, अभी खुश मत हो ज़्यादा। तो हम लोगों ने यही बात की जो आपने कही कि यहाँ पर कण कण में स्टोरीज़ हैं, घर घर में स्टोरीज़ हैं, शहर शहर में स्टोरीज़ हैं। तो मैंने कहा कि यार हम लोग इकट्ठा करके कुछ लोगों को, और हमारे यहाँ संस्कृति विभाग जो है, कल्चर डिपार्टमेंट बहुत ही इवॉल्व डिपार्टमेंट है। वी हैव गॉट 9 डिफरेंट लैंग्वेज अकेडमीज हियर इन भोपाल, चाहे वो सिंधी, पंजाबी, भोजपुरी, सब प्रकार की लैंग्वेज की अकेडमीज यहाँ, हिंदी, संस्कृत। तो हम ये चाह रहे हैं कि सारी स्टोरीज़ को कंपाइल करके हम स्टोरीज़ का एक डेक बनाएं जो अपनी वेबसाइट में डालें। स्क्रिप्ट राइटिंग की जो आप बात कर रहे थे, तो लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, तो हमारे लोकल स्टोरीज और फोकलोर्स भी, उनको भी आगे का उनके लिए मार्ग तय होगा। और एक बात और जो मैं जोड़ना चाहूँगा, हमारे यहाँ का फोक और ट्राइबल म्यूज़िक और कल्चर बड़ा यूनिक है और भगवान की कृपा से बिल्कुल अनडाइल्यूटेड है, अभी प्रिजर्व्ड है। तो इसको भी कैसे मेन स्ट्रीम किया जाए, इसके लिए भी हमारे मन में कुछ बातें हैं कि कैसे हम बम्बई में तो वही कट पेस्ट चलने लग गया है या हर जगह होने लग गया है, क्रिएटिविटी ख़त्म होती जा रही है। तो यहाँ पर जो रॉ स्टफ़ पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, उसको कैसे मेन स्ट्रीम सिनेमा के साथ में हम अलाइन करें कि उनके दिमाग भी खुलें और यहाँ से उठाएं चीज़ों को, और हमारे जो घर घर की परंपराएं, गांव-गांव की परंपराएं, गायन शैली, नृत्य शैली, ये सब इसको भी अंतर्राष्ट्रीय मंच मिले। इन सब पे भी हम काम करेंगे आगे। जी सर। मैम, एनी क्लोजिंग लाइन? बस यही कि एक्सप्लोर करिए मध्य प्रदेश, हमारे यहाँ शूट करिए, हम लोग आपको हर तरीके का सहयोग देंगे। और जाने के पहले मैं चाह रही थी कि अगर 2 लाइनों से हम लोग कंक्लूड करेंगे। बस मैं बोलना ही चाह रहा था मैम। मतलब आपका कंक्लूडिंग रिमार्क आ गया है क्या? कंक्लूड हो रहा है तो मैं गा देता हूँ। जी जी सर। तो मैं उसी गाने से कंक्लूड करता हूँ जिस गाने ने मुझे, मध्य प्रदेश से जो गाना मेरा हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी की शूटिंग के दौरान मैं यहाँ पे गाया करता था, गजराज जी भी होते थे, और उसके बाद सुधीर साहब ने उस फिल्म में मुझे गाने का मौका दिया वो गाना। तो बावरामन देखने चला एक सपना, बावरामन देखने चला एक सपना,
बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चला एक सपना। अब मध्य प्रदेश टूरिज्म और हमारे सबके लिए दो लाइनें। बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ, बावरे से इस जहां। ये मेरा इको है। इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो, बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो, बावरे से पैर चाहे, बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना, बावरा मन देखने चला एक सपना। थैंक यू, थैंक यू। आप सबका भी आने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये धन्यवाद देने का थोड़ा सा मैं भी जी सर अधिकार अपना इस्तेमाल कर लूं कि हमारे साथ में एक से एक हस्तियां जो आकर के मध्य प्रदेश में हमारे साथ इतना समय बिताया, आज अपने इनपुट्स भी दिए और मध्य प्रदेश की हौसला अफजाई भी की। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बिजी लोग हैं आप लोग, आपके लिए एक एक मिनट कीमती होता है, फिर भी आपने निकाला समय हमारे लिए और इतना अच्छा सेशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ। मैं आई एम वेरी श्योर दिस विल डेफिनेटली बी प्रूविंग टू बी अ माइलस्टोन इन टाइम्स टू कम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सभी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। बस कुछ मिनट और हम लेंगे आपके। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। एक और खास वीडियो है जो तैयार किया गया है। मेरा निवेदन है टेक्निकल टीम से, कृपया आप उस वीडियो को प्ले करें। बट अगर मांगेगा ना तो मांगता ही रह जाए, छीनना सीख। I found this experimental treatment in India. इनमें लॉयल्टी ना बहुत कमीनी चीज होती है। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। कृष्णा, तकरीबन 23 साल पहले तुमने 2 खून किए थे और तुम कल रिहा होने वाले हो। आप हमारा केस लड़ेंगे दीदी? इंसान को बहुत कुछ लग सकता है मालूम, लगने और होने में बहुत फर्क होता है। वरना ये भोपाल जंक्शन कब्रिस्तान बन गया। सीवान जिले के मखदूमाबाद गांव में जहरीली शराब पीने से अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, किस्से कहानियां नहीं, क्योंकि ये किस्से ही तो हैं। यादें बन जाती हैं और जमा हो जाती हैं किस्सों की गुल्लक में। I would like to help him out, get him back to his village. ये गांव में सबको घूमने की बीमारी है क्या? सब लोग मुझे घूम क्यों रहे थे? विक्की, तुम्हारी भूतिया गर्लफ्रेंड एक फैंटेसी है। फैंटेसी नहीं है, सच्ची मोहब्बत है हमारी। मृतिका थोड़ी सच्ची मोहब्बत। विजय सर कोई नॉर्मल स्टार नहीं, हम सबके दिलों के सुपरस्टार हैं वो। आपको जैसे आपके स्टार की फिक्र है, वैसे मुझे मेरे लड़के की। कल रात को विदा करा के वापस लौट रहा था तो रास्ता में इसकी बीवी खो गई थी। हर किसी का सपना होता है अपने पापा की तरह बनना, मेरा भी था।
मध्य प्रदेश में बहुत काम हो रहा है, जिसमें से कुछ फिल्मों के, कुछ वेब सीरीज के दृश्य आप सभी ने अभी देखे। मैं राम तिवारी सर से निवेदन करना चाहूंगी, मंचासीन हमारे जितने अतिथि हैं उनको MPSTDC की ओर से एक गिफ्ट हैम्पर आप भेंट करेंगे। हमारे सभी कलाकार जिन्होंने आज वक्त निकाला इस पैनल का हिस्सा बने, हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। और ये गिफ्ट हैम्पर्स बहुत ही प्यार से बनाए गए हैं और साथ ही साथ ये गोंड पेंटिंग जो मध्य प्रदेश की शान है, पहचान है, आपको भेंट की जा रही है हमारे आदिवासी कलाकारों, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के गोंड आर्टिस्ट द्वारा ये सभी पेंटिंग्स निर्मित की गई हैं। और आप सभी की तालियों के बीच मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर एक साथ हमारे सभी मंचासीन अतिथियों को ये भेंट दे रहे हैं, ताकि उनकी स्मृति में हमेशा ही मध्य प्रदेश जो बना हुआ है वैसा ही बना रहे। और यही हमारे इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य भी है, मकसद भी है कि मध्य प्रदेश सभी के जहन से उतरना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश जो है सभी के जहन में जिस तरह से बस चुका है वैसे ही बसा रहे और दिन ब दिन उन्नति करता रहे। मंच पर हमारे सारे ही बेहद खास कलाकार सुश्री सुनीता राजवार जी, श्री गजराज राव जी, श्री विशाल फूरिया जी, मोनिशा अडवाणी जी, मिसेस एना सूरा, मिसेस लारा मुलीना, स्वानंद जी, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सभी से। और मैं राम तिवारी सर से निवेदन करना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए, आप सभी का धन्यवाद के लिए। थैंक यू सो मच। आज के इस फैबुलस एंड मेस्मराइजिंग सेशन के लिए हमारे देश के अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हमारे डिग्निटरीज, हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, एक्टर्स, सिंगर, सभी हमारे एक छोटे से आग्रह पर इस आयोजन में उपस्थित हुए। Especially thanks to all of the delegates. We are also thanks to our international delegates, Anna and Lara, who have come from Spain with a very short duration. उपस्थित सभी हमारे साथी, हमारे डामर स्कूल के साथी, हमारे लाइन प्रोडक्शन कंपनीज के साथी, हमारे अलग अलग प्रोडक्शन पार्ट से जुड़े हुए लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से आए हुए लोग, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से आए हुए लोग, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ट्रैवल टूर ऑपरेटर जो आज इस सेशन में भागीदार थे, मीडिया पार्टनर्स, सभी का थैंक यू सो मच। और अंत में अब सभी को मध्य प्रदेश में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राम सर, और सभी का हम हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, आप सभी भोजन अवश्य ही ग्रहण करें। साथ ही साथ हमारे डेलीगेट्स का लंच अलग जगह पर है, कैफेटेरिया में है। मैं निवेदन करूंगी कि उनके लाइजनिंग ऑफिसर्स उन्हें वहां पर लेकर जाएंगे। लंच के बाद यहाँ पर 2 राउंड टेबल डिस्कशंस होने वाले हैं, जो लोग उनके लिए चिन्हित किए गए हैं। मेरा निवेदन है कृपया आप सभी लंच के बाद तैयार रहिएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी पहला राउंड टेबल जो है वो भी बेहद खास है, जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के बीच होना है। और उसके बाद एक और राउंड टेबल डिस्कशन है जो वेडिंग प्लानर्स, मीटिंग, इन्वेस्टीज, कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स और स्टेक होल्डर्स के बीच किया जाना है। और उसके लिए जितने भी इन्वाइटीज हैं आप प्लीज़ प्रेजेंट रहिएगा। हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनका
जो लंच है वो पवेलियन में प्लान किया गया है और साथ ही साथ डेलीगेट्स के लिए अलग से व्यवस्था है, उनके लाइजनिंग ऑफिसर्स उन्हें वहाँ पर लेकर जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः लंच के बाद। थैंक यू।